आसीगल सब आज सकाल सकाल फिजिक्स देखिए सुप्रभात सुप्रभात हेलो ऑल राजेश्वर समीक्षा आयुष्मान एसएस सूर्य नारायण जगन स्वाई गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग Dr. Subham Panda. And where is that Doyan student? Let's see what he will do today. Doyan student, Rafael Yadav, Tunes Piper. Hello Subham. तो आज जो क्लास रहिबो हमर एबे फ्रिक्शन ऊपर मेंटी करिया स्टार्टिंग रे पूरा मेंटी फ्रिक्शन ऊपर चलिबो मुंडो टिके रेडी होबो आगो तापर वर्क पर एनर्जी मेजर जिंस देखि दबो तापर छोटे छोटे जिंस इवनिंग टाइम बाकी रहबो तो आमे पुनी इवनिंग टाइम रे मेंटी करके वर्क पर एनर्जी को अच्छी एंडिंग कर दो वर्क पर एनर्जी एंड करे माने तुम खाली पॉइंट बतेर अछि मते तुम को टाइप रो क्वेश्चन को देखि कि जीवो एग्जाम एबे बहुत रिसर्च करे पे हम पकरे टाइम नै फटाफट निज दिमाग लगेले जिंसोडा आराम से बुझ पारे जल्दी जल्दी आ जाओ we'll start with the menti first huh? Good morning sir Vinay Dikshit sir so Vinay Dikshit sir is on rest for 3 to 4 days we'll start organic from tomorrow and today there will be 2 physics class 1 geology class I have to complete work per energy anyhow today तो बारंबार कहूँ पे यहाँ तो आम थ्योरी क्लास नुहे मुझे से जिनसर कनसेप्ट बतेबी जी जिन तुमको नीट एग्जाम रे मागे पढ़ाला बेले बहुत जिन बताई तो से नोट्स गुड़ाक देख जी जो भी पढ़ी था निजर नोट्स गुड़ाक देख ठीक ना क्वेश्चन गुड़ाक देख बस तापर आगू जी मिस्टर वायरस इज ऑल्सो देयर I will wait for 3 to 4 minutes more. Let all come. Then they will. Then I will start your quiz session. Sir, भी quiz रे भागो ने नहीं. He is simply watching this video in his cozy room. Hello, Vikas. जल्दी जल्दी पढ़े ऐसा स्टार्ट कर दो शीघ्र हेलो चंदन So Vikas is Vika Chaudhary Pradhan. Good morning. Nancy, hello. It's the sound of plasma. Plasma basically doesn't have any sound to give the effect, so it is the sound of plasma. So when I'm saying that, sound will not be there. Good morning. So I'll wait for 1 minute more. जो मैंने भी आसथिबो सेमानकु नहीं कि मेंटी पुन स्टार्ट करिवि
जोश रे पळे आस मॉर्निंग जदी जोश रे अछि दिन सारा पूरा जोश रे जीव तमरो फटाफट रेडी हो जाओ plasma membrane no plasma is not only membrane plasma is the fourth state of matter what is fire ta kono can you say that it is solid liquid or gas मॉर्निंग टाइम रे एमती हबा कथा न सब टिके नॉर्मल हो तापर हम करे नो प्रॉब्लम यस यस साउंड इज देयर टिके वेट करो अरे भाई टिके तो वेट करो साउंड नहीं साउंड नो ऑडियो अरे भाई ऑडियो जदी मु ऑन करबिनी तो साउंड आसीबो केमती भाई माने टिके पेशेंस रखो भाई यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स माने टिके पेशेंस रखो भाई यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स हां डॉक्टर पाकू जतो पेशेंट नहीं जीवो डॉक्टर हां डॉक्टर पाकू जतो पेशेंट नहीं जीवो डॉक्टर कोन कामुडी ही पड़े ना कोन पेशेंट को देखिया पे से कोए बस देखिबा कोन होउजी आ तमे एमिति हेलो ऋषिराज नीट टॉपर ऑल क्लियर हु इज दैट नीट टॉपर सुजनारायण पानी सर फायर कोन कहउतले टिके कहि दियंतु अरे से जो फायर रो जो फ्लेम थाए ना मैस्टिक ऑन करबा जो फ्लेम थाए तो सेटा ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस तुम भाभी बोले फ्लेम आम जो मैस्टिक ऑन कर फ्लेम टा ऊपर कहीं रहे इफ अर्थ है तो सेटा ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस तुम भाभी बोले फ्लेम आम जो मैस्टिक ऑन कर फ्लेम टा ऊपर कहीं रहे इफ अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट ताले फ्लेम तो तळ मुहा हवा कथा फ्लेम अट्रैक्ट्स फ्लेम तो तळ मुहा हवा कथा फ्लेम ऊपर मुहा है कि थान so that flame thing is your plasma and on plasma all the laws of Newtonian physics is not applicable chalo ta bhitar am pose ani research he jo can YouTube student can join Menti are yaar everyone can join Menti yaar YouTube student तो कैटेगरी है कि YouTube student आप student I am again and again saying आप is for only 1 year student ठीक है ना those who are preparing for NEET 2021 उड़िया बोल रहा हूं बेटा स्टार्ट करिया ताले समस्त हाँ मारले तापर मु मेंटी स्टार्ट करी फटाफट बताओ टाइम आसी गला हमरो टाइम आसी गला हमरो NEET updates you can get the updates from internet है ना no update September 13th रे हबो जदी न September 13th रे हबो जदी न होला NEET 2020 कैंसिल you all can join Menti okay start करे yes sir no sir आउट टाइम वेस्ट करे ने मते बहुत जिंस बतर भी अछि फटाफट स्टार्ट करे फ्रिक्शन ऑफ क्वेश्चन पेन पेपर साइड रेडी थिबो थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करे yes sir
यस सर नो सर आउट टाइम वेस्ट करे ने मते बहुत जिंस बतर भी अछि फटाफट स्टार्ट करियो फ्रिक्शन क्वेश्चन पेन पेपर साइड रेडी थिबो थियोरेटिकल क्वेश्चन अछि न्यूमेरिकल भी अछि सब किछ अछि फटाफट स्टार्ट करियो यस यस दिस क्लास विल बी इन ओडिया दिस क्लास विल बी इन ओडिया एंड इंग्लिश मिक्स स्टार्ट करिया संगे संगे में सो फर्स्ट ऑफ ऑल तमरो कोड टा आसीबा दरकार सो योर मेंटी कोड इज 240043 your menti code is today 240043 steps are very simple go to menti.com it will ask for a code you simply type this code 240043 those who are new go to menti.com it will ask for a code you give the code 240043 then at proper time I will start the questions let all the students join first the question will appear in the mobile so you simply on your mobile you simply focus on the screen of your mobile और जो पहले क्वेश्चन आंसर दउथबो तमे YouTube विषय किछि जानिया दरकार नहीं YouTube टाको तमे मिनिमाइज करि परिबो हैला खाली ऑडियो टा रखी कि तमे YouTube टाको मिनिमाइज करि परिबो आ क्वेश्चन आंसर तुमको देबार अछि फर्स्ट पेन पेपर साइड रेडी कर रखि दो 240043 is the code for today's Menti 240043 most of the students are ready now तो आउ 1 मिनट रा टाइम नबा समस्त को जॉइन करिया पे I think all are ready now ready समस्त रेडी समझते फटाफट जॉइन हो जाओ इट विल क्रॉस चलो इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 और भी ऐसे अछि शीघ्र शीघ्र तमे जॉइन करो फटाफट 240043 फटाफट डिस्कशन करे इन केस नेट स्पीड कोठी किछि प्रॉब्लम हैला टिके वेट करिवो रिफ्रेश मारिवो तमर संगे संग पळे आसीबो जॉइंड सूर्य नारायण पानी जॉइंड ओके 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 सो इट्स हाई टाइम वी विल स्टार्ट so already 110 students are there और भी जॉइन होचंदी तो जो माने परे जॉइन हो ताको मु बारंबार कोड कहबी किछ असुविधा नै so after 5 questions there will be a leader board I will discuss 15 questions regarding friction तो फर्स्ट क्वेश्चन जोटा अछि पहिले थ्योरी अछि टिके फसै परिबो तो सेत मु 40 सेकंड रो टाइमर सेटअप करछि मु तो रेडी जा समझते पेन पेपर साइड रेडी थिबो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू योर स्क्रीन इट्स बेसिकली ए थ्योरी तो टिके खाली वेट करिवो पेन पेपर साइड रेडी थिबो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू योर स्क्रीन इट्स बेसिकली ए थ्योरी तो टिके खाली वेट करिवो टिके खाली वेट करिवो टिके वेट करो आजिबो टिके खाली वेट करिवो टिके वेट करो आजिबो गोटे मिनिट गोटे मिनिट आसीबो आसीबो टेंशन नहीं होने टिके वेट करो आसीबो आसीबो चलो क्वेश्चन तुम आगे बाइसाइकिल वाला क्वेश्चन फ्रिक्शन फेमस क्वेश्चन है तो याद बहुत क्वेश्चन नहीं पारे ता बिसु गोटे टी मु डिस्कशन करछि बाइसाइकिल मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ सम पॉजिटिव एक्सेलरेशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स आर F1 एंड F2 रेस्पेक्टिवली ताले कोटा कोडे पड़िबो तो बहुत कम टाइम अछि तुम पाखरे कारण एटा थ्योरी अछि बोले सो टिके ठंडा मुंड रे देखि दी द तापर तुम आंसर दबो तो टिके टाइम ना बारे किछ असुविधा नहीं तो स्पीड हेले भलो जदि टाइम नहीं के आंसर तमरो ठीक होची देन इट्स ओके इफ यू आर नॉट इन द लीडर बोर्ड देन डोंट वरी लीडर बोर्ड कम्स विथ करेक्ट आंसर विथ फास्ट टाइमिंग सो टाइम्स अप आंसर इज बहुत पिला भूल देछ भाई 35 क्वेश्चन अछि 25 पीपल हैव गिवन राइट आंसर हैला ना और समस्त एरर अछि को जगह एरर रहला डिस्कशन करबी या पर क्वेश्चन टा भी जोटा अछि सेटा पहिले थ्योरी ही अछि तो फटाफट रेडी की था जोटा को मु देछि पहले 40 सेकंड रो टाइमर हैला नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फटाफट पढ़िबो यदि साउंड सुनि परछ ताले बोलो two objects A and B are thrown upward simultaneously with same speed the mass of A is greater than mass of B suppose the air exerts a constant and equal force of resistance on the two bodies air resistance टाको consideration ए निया आइछि ताले कोन हबो the two bodies will reach same height A will go higher than B will go higher than A any of the above three may happen depending upon
on the speed with which the objects are thrown. चलो तुम पाखे 10 सेकंड्स अच्छे मात्र बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमम आंसर मोर दरकार अच्छे आउ 5 सेकंड्स रहा 100 तो क्रॉसिंग करी गलानी 4 3 2 1 टाइम्स ऑफ 110 पीपल हैव गिवन देयर आंसर एंड 48 बाबा केमते एरर करूचो तमे सब हां आंसर हुए जतले एयर रेजिस्टेंस नथिबो मु जानितले तमे सब आंसर से दो काई स्टार्ट करली थ्योरी ओनली 15 पीपल हैव गिवन राइट आंसर एनालाइज इट बेटा जतले पहले थ्योरी भी पचारिबो ना थ्योरी भी तुमको सेमती ही पचारिबो टिके सिंपल टेक्निक मारी की थ्योरी तुम पचार दो एंड नाउ यू सी तो इनिशियल क्वेश्चन बहुत एपट सेपट होची मु एक्सपेक्ट करची जे या पर क्वेश्चन ओडा भला आसीओ या परटा भी पहले थ्योरी क्वेश्चन ही अछि टाइमर 40 सेकंड रे ही अछि तो मते देखियार अछि कोन करछो तुम माने क्वेश्चन तुम आगरे मोबाइल को देखो ठीक से फटाफट मु तुमको एपटे क्वेश्चन भी कहूची जापले तुम ठीक इजीली बुझ परिबो तुम निज कथा रे फोकस करले भलो हो block A is kept on an inclined surface just begins to slide if the inclination is 30 degree the block is replaced by another block B and it is found that it just begins to slide if the inclination is 40 degree and mass of A greater than B less than B equal mass all of the three are possible एमता करी की क्वेश्चन देछि तो टिके दिमाग लगै करिवो बहुत एपट सपोर्ट चलछि बहुत पिला आंसर दोउछो बहुत भूल भी आंसर दोउछो चलो पहले 15 सेकंड्स मात्र रहला तो 15 seconds पर मत देखियार अछि की कोन करूछ 10 seconds more already 70 people have given answer okay so times up 114 people have given answer and 39 answers are correct you see 37 answers are wrong 29 answers are wrong ए माने कोन करतले भगवान जानते से माने तो 39 people have given only right answer तो देखो पहले friction is not so easy you will get compulsory one question from friction and how much we are prepared you see तो क्वेश्चन लेवल किछ ना भाई लेवल बढ़ेबी मु केमती आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर नीट आई कांट इंक्रीज द लेवल नले लेवल बढ़ेले तो पहले फ्रिक्शन अवस्था तमरो खराब हे ठीक ना स्टिल थर्ड क्वेश्चन एपट सेपट चलची बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फोर्थ क्वेश्चन इट्स अ न्यूमेरिकल बट हल्का न्यूमेरिकल से बहुत कम टाइम देइची आई हैव गिवन ओनली 30 seconds for this question though it is numerical still I have given 30 questions single shot देखि के आस्तियो पाठ ठीक से पढि तो फटाक से आंसर दे दो तो से पय एटा मु 30 seconds रो टाइमर सेट करछि फटाक से आंसर दरकार मोर 30 seconds मात्र अछि तुम पाखरे फिजिक्स क्वेश्चन 30 seconds टाइम बहुत असुविधा कथा कि क्वेश्चन सेमते से पय देछि बॉडी ऑफ मास m is kept stationary on a rough inclined plane of inclination theta the magnitude of force acting on the body by the inclined plane is equal to very simple question and please Sanjukta Patra Ravindra Ocha you don't answer here you answer in the menti no problem एटी आंसर दे किछि बेनिफिट एबार नहीं आई विल नॉट लुक एट इट अरे जदी गेम खेलियार अछि मैदान ने आसी की गेम खेलो सेठी बाहर रहि की बैटिंग करले कोन हो फील्ड बाहर रहि की मोटे भलो बैट्समैन कहले केही सुनिबेनी मैदान ऊपर आसी कर मते लागु जे क्वेश्चन आंसर बहुत पिला करेक्ट ही देबे 115 पीपल हैव गिवन आंसर ए भगवान हे भगवान क्वेश्चन देखो भाई आई हैव नॉट आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आई हैव आस्क्ड व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक ओनली 24 पीपल हैव गिवन राइट आंसर कोन कोन होउची कोन भाई कोन पाठ कोडी अछि कोडी हां भाई शीघ्र रेडी हो चलो लास्ट क्वेश्चन जीवा फर्स्ट लीडर बोर्ड पई तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ता अछि हमर हम आगु आछि 90 सेकंड रो टाइमर सेट करछि हल्का कैलकुलेशन अछि देयरफॉर 90 सेकंड फटाक से देखो तुम आगरे आसीबो क्वेश्चन भाबी चिंती करबो 90 सेकंड्स टाइम अछि 15 सेकंड तमे भाबिया पे टाइम दियो सिस्टम गोटे देइछि गोटे वेट एपटे लागिछि 8 न्यूटन सेपटे गोटे वेट लागिछि दैट वेट भी देइ दिछि 40 न्यूटन और से जो एंगल टा देइछि 30 डिग्री क्वेश्चन पचाछि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन केते इफ द सोन सिस्टम इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग माने पटाक से कहूछि पले खसिनी त माने अपन तो पूरा खसिया पे रेडी के अछि त माने सिस्टम एबे भी रेस्ट रे ही अछि तो तुमको बहुत फास्ट आंसर देबार अछि तुम तो देखिर अछि तुम आंसर कोन दोउछो अप्रोक्सीमेशन टिके दरकार हबो तुम पकरे एबे भी टाइम अछि टेक टाइम नो प्रॉब्लम सिस्टम रेस्ट रे तिले बढ़िया बढ़िया जिंसर टेक्निक दिया अछि तुमको चलो पिला तो एबेटरू भी आंसर दे देलानी देखा जाऊ कोन होउछ 45 सेकंड्स बाकी रहला हल्का आराम से 90 सेकंड्स दिया है तुम मान को नो प्रॉब्लम आराम से चलो
हाफ मिनिट मोर आउ हाफ मिनिट रो टाइम बाकी रहला 62 people have given answer it has crossed 70 20 seconds more मो कथा को बिल्कुल सुनानी निज दिमाग लगी करो ठीक टाइम रे आंसर दियो भाई टाइम सरी सरी जाउची 11 10 105 people have given answer 5 seconds more 4 3 2 1 115 people have given answer and most of the answer is wrong 46 13 20 category रे अछो पिले 35 people have given right answer I'm not satisfied with these 5 questions है ना I'm not satisfied and I think you will not be satisfied also this is not the performance I am expecting from all of you where we have only 1 month time for our preparation पिले हम तो गप्पटा मारू ना पिले बहुत बड़ बड़ गप्प मारू जे हम एमतिया रेडी होछु हम सेमतिया रेडी होछु this thing clearly says that we are not at all ready एबे भी टाइम अछि पिले शीघ्र निजो को रेडी करो लीडर बोर्ड रे देखियार अछि के कोन करछि हैला पांचटा क्वेश्चन पर कारण या पर सब न्यूमेरिकल बेस्ड आ जिवो तम मानकर लीडर बोर्ड चेक करी वर्तमान तो लीडर बोर्ड रे आसी गले चलो चलो देखिया के आछन जॉनी चलो के अछि एबे जॉनी जॉनी यस पापा देन संबित रुद्र मिश्र अभिलाष अरे टा कोटा अभिलाष अभिलाष दास करे सुबोसनाथा इज देयर धरित्री इज देयर श्वेता अब दे रहा हूं बेटा वेट कर मुंडटा बोर्ड रे अलिया हो ठीक अछि ऋतिक रोशन त्रिपाठी चलो ओके ठीक अछि जॉनी जॉनी यस पापा नंबर 1 रे चलछि वर्तमान संबित रुद्र मिश्र अभिलाष देखिया के सब मेंटेन करि परछो ए जिंस कटा नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इट विल बी टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड किंतु सबुटी दिमाग दरकार हैला ना अच्छा मते खाली गोटिए जिंस तुम खाली पचर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा पूर्वरु इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन हाई or your josh is low or your josh is low आगो बताओ तापर आगो जीवी फटाफट बताओ कोन शीघ्र सारी की तापर पुनी यार शीघ्र सॉल्यूशन भी नबार अछि मते if the level of the question high the question I have given 5 questions is the level of the questions high or your josh is low these are the question you can expect in the exam मु पूरा एग्जाम पैटर्न ही क्वेश्चन बनै छी भाई नेटवर्क इज स्लो नहीं भाई आमाडू नेटवर्क तो ठीक अछि जोश इज हाई ओके वेरी गुड सो या पर क्वेश्चन ट्रिकी है एटा तो पड़ियो भाई तमर क्वेश्चन मु कोन करबी देखो लास्ट क्वेश्चन ट्रिकी नथिला लास्ट क्वेश्चन टा प्योर कैलकुलेशन थिला एबे जति क्वेश्चन देबी टिके प्योर कैलकुलेशन आसीबो टेक्निक तमे जदी ठीक से सिंगल शॉट देखिथिबो टेक्निक मन रखिथिबो तल तमे बहुत इजीली आंसर देई परियो तमे एमता क्वेश्चन बहुत कॉमन थाए बॉय मानकर जोडा कि पिला लेंदी वे रे करंती मु सेई क्वेश्चन ही देछि कारण एग्जाम सेमता क्वेश्चन देई सारछि हैला तो नेक्स्ट जो पांचटा क्वेश्चन तम पाको अछि ऑल आर न्यूमेरिकल्स सो लेट्स सी कोन करछो पेन पेपर रेडी रखो दिमाग लगै क्वेश्चन सॉल्व करियो मु जदी 1 मिनिट टाइम दोउची ता माने 1 मिनिट रे सॉल्व हेई परियो लेट्स सी चलो रेडी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तम आगरे the next question am mote numerical dechi a block is given certain upward velocity along the inclination of elevation alpha inclined plane अछि ऊपर को फुपडा हिची टाइम ऑफ ascent to upper point बहुत जनरल क्वेश्चन वाज फाउंड टू 1 मिनट रे केमति करियो was found to be half the time of descent to रे केमति करियो was found to be half the time of descent to the initial point the coefficient of friction between the block and the inclined plane is so I have given 1 minute time why I have given 1 minute time I know you also know तो देखियार अछि 1 मिनट भीतर के जण आंसर देई पर फटाफट मत आंसर दियो पहले 20 सेकंड रहला बाकी चलो कम आंसर आसु मोर असुविधा नहीं क्यों जति के आसु ठीक आसु 7 6 5 100 it has crossed 100 2 1 ओके देखिया कोन करछो तुम समझते answer should be C and C 29 it's not good sign beta 33 32 wrong 29 only correct 8 वाला तो छाड़ो कोन कहबा 8 वाला डायरेक्ट ढाबा मार दी
इट्स क्वाइट क्लियर एट वाला पूरा ढाबा ही मारछ 0.2 tan अल्फा कोड आसीबार ही नहीं हैला तो के जन ढाबा जो माने मारछ पिले ढाबा तुमको सब हेल्प करिवनी ताको टे देखि संभाळिबो से बेसी टाइम लगुचे टाइम लागियोनी बाबा जो डिस्कशन करी मार्क करिवो ठीक से नेक्स्ट क्वेश्चन दोची वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन टा शीघ्र दिमाग लगाबो 1 मिनिट टाइमर सेट करछि या पे 1 मिनिट टाइमर सेट करछि एमतिया दिस क्वेश्चंस आर कॉमन बेटा तो याकू जदी तुम कहबो टाइम बेसी लागुची ताल तो असुविधा हो चलो रेडी करो शीघ्र शीघ्र पी फोर्स पकाई बहुत जनरल क्वेश्चन एटा बहुत जनरल क्वेश्चन पी फोर्स पकाई जहाँ पर किसी मिनिमम पी फोर्स पकाले रेस्ट रे अछि ताले फोर्स पी न होई कि जदी p by 2 ही थांता ताले व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ओके सो लेट्स सी व्हाट आर डूइंग सभा सर विश्वनाथ दास 3 year ड्रॉपर हाँ सो व्हाट आई नो विश्वनाथ दास सो व्हाट ओके ए क्वेश्चन आंसर मते देखियार अछि कोन करछो तुम समस्ते 27 26 टिक आराम से जाओ भाई 70 एक जिनसोडा सेते कैलकुलेशन मागिबन 1 मिनट टाइमर काइन दोउची मु तुमको भाई एग्जाम रे भी तुमको सेया ही मिलबो एंड यू कांट कंप्लेन टू एनीवन तुमको सेते किन टाइम मिलबो आ एक क्वेश्चन तो एग्जाम फिटिंग क्वेश्चन पूरा मोस्ट बेसिक क्वेश्चन आंसर दो न पिले चलिबो आंसर दे की बेसी भूल करनी पिले 0 इज ग्रेटर देन -1 देखिया तुम कोठी अछ 7 नंबर क्वेश्चन ने एबे कोन अछि अवस्था टिके देखि देबा हमें चलो 47 देलेनी जो माने की भूल भाई आज कोन होउची त मनकर हां कोन होउची भाई 27 पीपल हैव गिवन राइट आंसर ओनली नॉट प्रिपेयर्ड बेटा मु आगुरु कहिची पिले पाठ आगु आगु जतल जीव तुम लोड बढ़ियो सो हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड कोन करथलो भाई ये कोरोना टाइम रे सब खाई पी के आ करके सोई दिवो फुल्ली के आस्तिबो सब जाक एकादरे आई एम नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड विथ दिस परफॉर्मेंस ओनली 27 करेक्ट आंसर नो 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 शीघ्र एडजस्ट करो निजो को भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मन को पाखु आछे नेक्स्ट क्वेश्चन भी से न्यूमेरिकल ही अछि तो ताकू टिके ट्राई करो सॉल्व करिया पे नेक्स्ट क्वेश्चन जेतु लैंग्वेज रे देइछि से पे 90 सेकंड रो टाइमर सेट करछि या पे 60 केजी बॉडी अछि जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट फॉर आफ्टरवर्ड्स the coefficient of static and kinetic friction are 0.5 and 0.4 acceleration of the body is जो माने सिंगल शॉट रो फर्स्ट एग्जांपल देखिथिबे से माने आराम से बुझिबे किछ असुविधा हबनी भाई यदि ठीक से सेतलो बुझतिबो ताले आराम से ही परियो कांसेप्ट कहितली भाई 1 मिनिट बाकी रहला आराम से तरबर हेबा किछ दरकार नहीं तरबर की भूल करा दरकार नहीं सेटा तुम रैंक रे इफेक्ट पकेओ ड्रास्टिकली एपट सेपट आंसर ही जो पिले फटाफट आंसर दरकार अछि वर्तमान क्वेश्चन मु बेसी ट्रिकी भी रखिनी ऑल आर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन सेकंड हाफ रे रखी छी जोटा कि बहुत कम टाइमर रे क्वेश्चन पचार भी डर लागिवो किंतु क्वेश्चन इजीली आंसर बाहर जिवो सो हड़बड़ेर नहीं बहुत आराम से चलो बिले बहुत आराम से चलो बहुत आराम से आंसर बाहरिबो यारो बस बेसिक रूल गुडा को तमे जति स्ट्रांग थिबो आराम से हिजो कांसेप्ट मु तुमको सिंगल शॉट रे पूरा बते देछि हमर गोटे बड़ पार्ट सर जाउछि बिले लॉज ऑफ मोशन सरिबो फ्रिक्शन एपटे सरला सिंगल शॉट साहाय्य रे एपटे वर्क पर एनर्जी सरला दिस इज अ वास्ट पार्ट 4 3 2 110 people have given answer I don't know what will happen now चलो टिक्के आसिला बे लाइन लेंथ को टिक्के आसिला बे लाइन लेंथ को चलो एटा मेंटेन करो बर्तन मेंटेन करो और क्वेश्चन 45 सेकंड्स रो मु दोउची बिले न्यूमेरिकल अछि 45 सेकंड्स रो दोउची टिक्के दिमाग लगेबो पिला आंसर बाहर जो हैला स्टार्ट करो तो क्वेश्चन नंबर 9 तम आगरे अछि बिले हैला 45 सेकंड्स रो टाइमर देइची block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a horizontal force 5 newton फटाफट फिगर करथबो coefficient of friction between the block and the wall is 0.5 the magnitude of the frictional force acting on the block is टिके चेक करिवो 0 वैल्यू 10 देनी 9.8 देछि काळे भूल हे जबो विश्वनाथ तू मेंटी रे आंसर दोनु विश्वनाथ द नेम सभा साहू
Is it Vishwanath? I'm confused. 3 2 1 भूल हेबार चांस अछि क्वेश्चन एटिके हेले बी चलो हेले बी बॉडी ची एबे बॉडी ची 100 पिला आंसर दैछन ता भितर 46 पिलांकर करेक्ट आछि तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन ता हम देछि बोले पूरा सिंपल सेडी दिमाग लगाबो कारण फिगर सेडी दिया छि सेडी दिमाग लगाओ फिगर ड्रा करिवनी सेडी दिमाग लगाबो आंसर बारे भाबी चिंती तुम करियर अछि क्वेश्चन लास्ट लाइन ता ठीक से पढिबो कारण ए जो क्वेश्चन पे मु 45 सेकंड टाइमर सेट करछि कैलकुलेशन नहीं आदरे माने थ्योरी भी नुहे दिमाग लगे खाली करियर अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आगरे मोबाइल रे मुंडोटा थिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम आगरे एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट लीडर बोर्ड रेडी दीटा फोर्स देखि छि पले 10 न्यूटन 2 न्यूटन ऑफ फोर्स आउट फ्रिक्शन भी पडुछि इफ f1 is removed the resultant force acting on the block will be how much ब्लॉक ऊपर रिजल्टेंट फोर्स केते पडिबो बहुत भूल हेबार चांसेस अछि तो मते देखियर अछि तमे कोन करछो बहुत भूल हेबार चांस अछि तो टाइम नियो मते दरकार की 45 सेकंड्स रो टाइमर सेट अछि पिला 45 सेकंड्स रो टाइमर सेट अछि याद रे तो 20 सेकंड्स अछि तमे लास्ट 10 सेकंड रे भी आंसर देई परिबो किछ असुविधा नै ए क्वेश्चन पूरा माने हेवी फसेइबो पिलांगो तो मते देखियर अछि बेसी फसुचंती ना बेसी फसिबारु बंची की पळे आछुचंती नाउ यू कैन आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज़ 10 सेकंड्स लेफ्ट एबे फटाक से आंसर दियो एबे बेसी रु बेसी आंसर मिलिया दरकार 5 सेकंड्स मोर तो स्टिल याद रे 3 2 1 100 छुइलानी एतरको हां 100 जस्ट छुइला 103 पिला आंसर दैचंदी अरे भाई 40 पिला एंड दिस आंसर वाज एक्सपेक्टेड मु भाबितिली जे ए आंसर ता पिला माने बेसी देबे किंतु पिला आंसर एटा ठीक नेट फोर्स 0 रहबो तम माने फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करतलो पिले एटा फ्रिक्शनल फोर्स पचार नथिला नेट फोर्स पचार थिला तो सेतो हम क्वेश्चन जान सुनी की देइथिली सो आफ्टर 10 क्वेश्चंस वी विल गो टू द लीडर बोर्ड फिजिक्स रो सबु चैप्टर मेंटेन करे हां भाई सबु चैप्टर मेंटेन हबो माने क्वेश्चन गोडा को कांसेप्ट तो एटी चलिबो क्वेश्चन मेंटेन चलिबो हैला ओके सो गोटे मिनिट एबे हमें टिके लीडर बोर्ड चेक करबे सो समस्त निजो पोजीशन मेंटेन करछन ना एबे देखियार अछि सो न्यू गेम प्लेयर इज देयर किंतु पुना गेम प्लेयर माने ही अछंती तो लेट्स सी हु इज वेयर वेरी गुड रुद्र मिश्रा सुबस नाता संबित डहरा कोविड 20 अच्छा 19 नहीं कारण ए वर्ष से फ्रेश आछि वर्तमान कोविड 20 धरित्री फ्रिक्शन देन AK46 इज देयर आयुष्मान इज देयर मुंडोटा बोर्ड रे ओलिया तो रुद्र मिश्रा वेरी गुड चलो आउ प्रीवियस खेलाड़ी सब कुआडे उडी जाइचंती तांको भीतर पिले संबित कुमार ही रहिची नुआ गेम प्लेयर पळे आछंती पिले डहरा पळे आछि रुद्र मिश्रा डायरेक्ट मार्केट को ओलेइची आ स्टार्टिंग रे के जण तिले स्टार्ट अर्थर को की फर्स्ट हेइतला लीडर बोर्ड रे से एरिया रे नाही एथर को मुंडोटा बोर्ड रे ओलिया तो मुंडोटा बोर्ड रे ओलिया एबे भी अछि किंतु लास्ट आडू खसी आसला बट एबे भी कहूची जो तमानकर आंसर करेक्ट आछि नो प्रॉब्लम कारण एटी पिले स्पीड भी मायने रखछि पॉइंट्स हिसाब रे बहुत पाखा पाखी पॉइंट सुबसनाता और रुद्र भीतर बहुत ओनली 100 पॉइंट्स भी नुहे डिफरेंस अछि आउ ठीक अछि बाकी स्पीड ठीक अछि आउ पांचटा क्वेश्चन फाइनल देन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन एतर को सबु जाको क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैला ट्रिकी फ्रिक्शन को अलग अलग चैप्टर संगे मिक्स करे की पचार अलग अलग चैप्टर माने बेसिक चैप्टर संगे मिक्स करे की क्वेश्चन पचार सो नेक्स्ट क्वेश्चन तम आगे timer set 1 minute ro block of mass 2 kg is given a push horizontally and then the block starts sliding over a horizontal plane the graph shows the velocity time graph of the motion the coefficient of sliding friction between the plane and the block is confuse करबो बोली 1 minute रो टाइमर दै छै तम कंफ्यूज हे जाउ छु ठीक अछि टेंशन नै ना कांसेप्ट क्लियर करंतु सर तो कांसेप्ट करबी नि 10 15 टा सरले तो करबी आ कोन कांसेप्ट रे भाई तो काम क्लियर हबा मो काम नुहे क्लियर करेबा सोना साहू सर आई एम ए CBSE physics teacher and see your techniques regularly to develop my knowledge thank you sir thank you ma'am जा भी तुम तो जानि परनी so I'm glad कि it's helping you also thank you sir 7th question of concept टिके बुझो I will अरे भाई सब बुझे भाई मु 15 टा क्वेश्चन तुम देही पळेबी हां चलो 3 seconds more 90 students have given answer 94 students have given at last answer and कौन करी भाई वर्तमान
If 17 people have given right answer, then it is precarious. This is high time. This is high time. Check your concepts. Check your speed. कौन लगुतला है पर्यंत जाए परीक्षा जेबे भी हो आमे कर दो देखो तुम आगे तू आई छे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनिट रो टाइमर सेट करछि सेही क्वेश्चन आउ थरे बस तेढ़ा करी की दिया है छी cos 37 4/5 हेता sin 37 3/5 हेता मुंडे रखी की क्वेश्चन आंसर दबो 1 मिनिट टाइमर सेट ब्लॉक रो मास पिले 1 kg अछि on a horizontal surface truck वाला क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट थोई देई छी एठी the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6 if the acceleration of the truck is 5 meter per second square then frictional force acting on the block is पूरा truck question टा थोई देई छी पिले पूरा NCERT question I have simply twisted some data otherwise this is the direct question from your NCERT and if you are not able to answer this then shame on you so 1 minute time general question पे पूरा fitting अछि so 30 seconds timer I have given so most of the people have already given answer 20 seconds more तो मते देखियार अछि कोन होउची आज कोन होउची भाई आज कोन होउची कंफ्यूज हो जाउछ शशांक शेखर भाई कंफ्यूजन तो भाई सब क्वेश्चन करेबो फिजिक्स बिले चलो वेरी गुड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ठीक देइछ सो इट्स ओके हैला ना एनसीईआरटी क्वेश्चन ना आंसर टिके दियो हैला अच्छा बोले मोर काम करछि मते काई लागु जे तुम माने फसुछ आज हेवीली तो थाओ लास्ट को मु डिस्कशन कर देबे टेंशन नबर नै नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनिट रो टाइमर अछि अगुर हॉरिजॉन्टल थिला बे टिके तेढा करी की देइछे तो टिके रेडी की करबो टिके फास्ट करबा sin 37 cos 37 वैल्यू टिके ठीक से पुट करबो भाबी चिंती करबो बिले मते लागु छि मु 1 मिनिट टाइम टा एक क्वेश्चन में बिकॉज़ इट इज प्योर कैलकुलेशन बेस्ड देयर इज नो ट्रिक काले कैलकुलेशन एपट सपोर्ट होबो स्टिल ट्राई करो टिके बहुत इजी क्वेश्चन पचा छि फ्रिक्शनल फोर्स केते पडु छि फ्रिक्शनल फोर्स केते पडु छि इट्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट नाही बिले सिंपली टिके भांगिया पे चेष्टा करो 10 रो 100 रो cos 37 sin 37 वैल्यू मुहर टिके रहबा दरकार तो सेटा रहिले तमे जेकी इजीली कर परिबो भाई एक क्वेश्चन जो माने फास्ट एतिके टाइम भीतर 5 जन आंसर देइछो रे सेही 5 जन करी फर्स्ट एरर ही आसीबो दिव्य त्रिपाठी सर पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी पढिबा को जेतिकी इच्छा होनी आपन को क्लास करबा को बहुत इच्छा होची भाई दिव्य त्रिपाठी पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी are you an MBBS student okay you have 10 seconds more thank you still thank you Divya 5 seconds more 90 people have given answer no problem देखिया कौन करछो तुम माने सब सी आंसर देई चंदी एंड सी इज करेक्ट आंसर हां वेरी गुड मु भाबी दिले एटा बोधे कम टाइम पढी जीवो किंतु यात्रे बेसी दिमाग नथला कैलकुलेशन टिके फास्ट करतले हेतांदा सो टू क्वेश्चंस मोर पिले टिके निजो को टिके सुधारो हमें कोन फसी गलानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन टा अछि पिले 1 मिनिट रो टाइमर सेट करछि पूरा पूरा बतेइतली यार कांसेप्ट सिंगल शॉट रे तो मते देखियार अछि के जने क्वेश्चन आंसर दोजो सो क्वेश्चन तम आगे 1 मिनिट रो टाइमर सेट अछि वेरी बेसिक क्वेश्चन जानि सुनी खाली टिके फसाइबा पे चेष्टा कराई छ बड़ कथा किछि नै सो क्वेश्चन तम आगे For the arrangement shown in the figure, the tension in the string to prevent it from sliding down is tikke dimag darkar tikke. 4 people have given answer. Very good. All those are wrong. For this question, you are taking 5 seconds time, beta. Tamane more level kami gala. Yes, sir. Third year Vim sir. Okay. I'm glad कि you are watching this. I'm glad. Thank you. So you have 24, 23, 21, 20 seconds more. 53, 15 seconds more. Already 80 students have given their answer. 77, 80, 90, 8, 7, 6, 5, 4, 100 people have given answer. Let's see what's the answer.
आउ very good, very good, very good. 55. None of these answer zero हबार अछि. तो सेतपै को एसबु जिंस गुडा को ठीक से मार्क करो. Okay, we'll go to the last question, then we'll go to the leaderboard, then I will start discussing all the questions. Confuse हबार नहीं. Last question जोटा देछि पिले 90 seconds रो टाइमर सेट करछि. 90 सेकंड काहे की देछि म आगो टिके रेडी जाओ सब. यारो पिले फ्रिक्शन संगे किछि रिलेशन नहीं. भाबी चिंती करबो ए क्वेश्चन बेलून हे कि तुमको थरे पीएम रे पचार दिला. मु ताको टिके अलगा किछि कर देछि हैला. तो देखिया के जना आंसर दउछ फटाफट. 90 सेकंड्स तो ए क्वेश्चन पे अधिका अछि. तो देखियार अछि मते कोन होउछ. साबा साहू अरे कॉमन यार बाहर रही की बैटिंग करी किछि लाभ नै केही देखिबार नै. फील्ड ऊपर को आ गेम सेठी खेल जना पड़ियो औकात केते अछि. An empty plastic box of mass 9 kg is found to accelerate up at the rate of g by 3 when placed deep inside water. Mass of the sand that should be put inside the box so that it may accelerate it down at the rate of g by 4 is. So timer ठीक अछि. तो तमे एतिकी टाइम भीतर आंसर दो कारण एटा कैलकुलेशन क्वेश्चन टा हल्का कांसेप्ट अछि बहुत हेवी नुए. So still you have got 1 minute time. So try it. जो माने ढाबा मारचो भाई बस मुंडे रखी था. एग्जाम इज ऑन September 13th. चलो 10 सेकंड्स रो टाइम बाकी रहला. या पे सफिशिएंट टाइम हमें देथिले. सो याद रे बेसी दिमाग दरकार नहीं. हल्का कैलकुलेशन अछि. प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन को ही पीएमटी क्वेश्चन पचरा है छे. टाइम्स अप एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ योर बट नंबर ऑफ कौन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखले. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखले एंड सी हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड. 19 people have given right answer only. So let's see कौन है कौन खर्च समस्ते लास्ट को लीडर बोर्ड सब बते दब को प्लेयर को जगह रे अछि. Okay, so from the leaderboard it's clear that the game has already changed. सुबसनाता very good. ता परे परे पिले डहरा अछि. डहरा बहुत तळु बहुत ऊपर को आछि. संबित कुमार रुद्र मिश्रा 4th पोजीशन को पळे आछि. धरित्री is there, friction is there, then covid 20, then AK, then Om. I think this is Om Prakash Jena. मुंडटा बोर्ड रे ओलिया ठीक अछि ना. अच्छा ओके. So no, I will not clap for anyone because I am not satisfied with the performance. Still Subhasnatha has stopped. Still I am not satisfied. Brush up again for 4 marks. I am giving you 1 day. आज डिस्कशन giving you 1 day. आज डिस्कशन करबी एबे जति की पुनी 15 क्वेश्चंस आउट रे इवनिंग रे डिस्कशन करबी पूरा ब्रश अप करे देबी किंतु बेले होनी हैला ना. नाउ यू कैन कमेंट द क्वेश्चन लेवल वाज हाई और लो. अदरवाइज नो क्लैपिंग फॉर एनीवन. तो एबे डिस्कशन करिस एबे थरे डिस्कशन करबी जे कोन हैला असुविधा समस्तंकर. सर हाउ टू स्पीड अप बेटा ए जिंस ही स्पीड अप करबो तुम. डू यू नो व्हाई आई हैव इंक्लूडेड मेंटी बिकॉज़ it will increase your speed. Till now we are very much confident that we are ready for everything, but this thing indicates that we are actually not ready. If I am saying 40 seconds for a theory question, if I am saying 1 minute for a numerical, if I am saying 1 minute for a tricky question, then that is the time you will get in your exam. एग्जाम रे भी तुमको एतिकी टाइम मिलियो. मु तुमको तमरो दुश्मन नुए जे तुमको एतिकी टाइम दोउची. You will get this much time in your exam. And how to speed up? The only thing is that concept, practice. कोडी ना कोडी पिले तमे याडे साडे जिंस रे मुंडो पुरे की निज प्रैक्टिस छाड़ देइचो पिले हैला ना. And the day you will leave your practice, your speed will decrease. ठीक ना. Sir, your educational style is so impressive. Thank you. शुभम पंडा सर क्यों लास्ट गुडा टिके लेंथी क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन लेंथी थिला. क्वेश्चन लेवल इज मीडियम. ओके, सो लेट्स सी
एबे हमें डिस्कशन स्टार्ट करियो तो डिस्कशन में देखिबा एक्चुअली कोन हेतिला कोन न हेतिला तो हम गोटे गोटे सबु जाकर गोटे गोटे पिले पूरा डिस्कशन नेबी गोटे दीटा क्वेश्चन ही सैटिस्फैक्टरी मते आंसर मिलिथिला आउ सबु जाकर काहे की कोठी सेमति किछि ठीक नथिला हैला एबे भी कहूची पिले क्वेश्चन स्टार्ट करिया पूर्वरु ब्रश अप योर नोट्स ठीक ब्रश अप द न्यूमेरिकल go through quite clearly in the single shot सब जाको क्वेश्चन नहीं पर I have included all the varieties so देखिए कौन है जिनसे ना a bicycle moves on a horizontal road with some positive acceleration play the question was here the bicycle moves with some positive acceleration दीटा टाइप रो क्वेश्चन नहीं था गोटेला जीरो एक्सेलरेशन आउट होता पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन पहले the question was here the bicycle moves with some positive acceleration दीटा टाइप रो क्वेश्चन नहीं था गोटेला जीरो एक्सेलरेशन आउट होता पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन the force of friction exerted by the road on the front and the rear wheels are F1 and F2 काई कम टाइम देइथिली this question you can find in any book so जदि बुक भी ठीक से करनो ताले आउ तुमको केही पृथ्वी रे बंचै परिबेनी the answer is D the question is why पहले when we cycle ठीक है ना देखो पहले जतला हम साइक्लिंग करू ना दीटा सिचुएशन अराइज करे गुटे सिचुएशन वेयर वी पेडल आ बेले बेले पहले हमें जतले टायर्ड हे जाओ हमें पेडलिंग न करी के छाड़ दो ताल भी साइकिल चलता है देन देयर इज आल्सो फ्रिक्शन सिमिलरली इफ यू कैन थिंक एज ए हिल जदि गोटे हिल हमें भाबीबा व्हेन वी मूव अप द हिल वी हैव टू पेडल द साइकिल कि जतले पहले डाउन द हिल हमें आसो तो सेतला हमें पेडल छाड़ दो ठीक है ना नो फोर्स इज एक्सर्टेड तो एटीसी कहूची जे सम एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज देयर पॉजिटिव एक्सेलरेशन माने वी आर पेडलिंग एक्चुअली तार मीनिंग ता हला हम पेडलिंग करछे अब हम जतले पहले साइक्लिक रे पेडलिंग करू द चेन इज कनेक्टेड टू द रियर व्हील ठीक रियर व्हील टा जतबेले चाले आ सब रिजिड सपोर्ट थाए द चेन इज कनेक्टेड टू द रियर व्हील ठीक रियर व्हील टा जतबेले चाले आ सब रिजिड सपोर्ट थाए रिजिड सपोर्ट साहाय्य आमे कोन करू रियर व्हील टा कोन करे फ्रंट व्हील को धक्का मारे आगु ठीक अछि एबे देखो ताले जतबेले फोर्स पकाउची ए जो रियर व्हील टा अछि ए जो रियर व्हील टा अछि एटा पहले साडू को जाउची त माने व्हील टा तो पहले एमिति रोटेट करतो ताले यार जो बॉटम मोस्ट पॉइंट टा थिबो bottommost point is moving in this direction therefore the friction on the rear wheel will be in this direction F2 ठीक मन देखि सुनिबो आंसर ओटा को फटाफट बताउची मन देखि सुनिबो लेट्स से पहले आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रिक्शन इज आल्सो एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन मु पिला को सबले क्वेश्चन पचारे आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन बट माय लेग्स आर मूविंग फ्रिक्शन मो ऊपर पडोनी फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन माय लेग हम गोडो जाउची कोडे पछु को जदि पिले मो गोड़ पछु गला तले पिले फ्रिक्शन तो आगु को पड़े और जो पिला भाबी तो मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन पड़े से कहबो इफ अ मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन फ्रिक्शन विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज रॉन्ग एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज रॉन्ग if a man is moving in this direction friction will if a man is moving in this direction friction will also act in this direction okay तले पिले ए जगह रे साइक्लिस्ट आडू को जाउची किंतु तमे देखो व्हाट्स हैपनिंग टू द व्हील so wheel is rotating like this the motion पिले याडू को अछि तले पिले फ्रिक्शन पछपटे जोटा अछि सेटा पिले F2 आगु को ही रहबो ठीक आउ एबे भाबो एटा उटा रिजिड सपोर्ट अछि एटा रिजिड सपोर्ट लोको बसछि कोन अछि आउ एटा हला पिले फ्रंट व्हील टा we are not applying force on the front wheel we are applying force on the rear wheel तले आगो व्हील टा को कोन होछि ना जो रिजिड सपोर्ट अछि पछो व्हील टा जतले मूव करछि से रिजिड सपोर्ट रो हेल्प रे आगो व्हील टा को पिले आगु को धक्का मारछि तले पिले आगु को जदी धक्का मारला तले एई जगह ऊपर जो फ्रिक्शन टा पड़िबो सेटा पिले पछु को पड़िबो सो on the front wheel friction is backward on the rear wheel friction is in the direction of motion F2 acts in forward direction and F1 acts in the reverse direction this is the answer both plankar answer bhul thila I don't know why but if no external force is there भाबो पिले गोटे गडानी रे हमें गडुचे पेडलिंग करने गोटे गडानी रे हमें गडुचे ताले दीटा को पिले स्लाइड करछन हमें तो पेडलिंग करने त माने दीटा को ऊपर धक्का बाची आगु को तल पहले दीटा को ऊपर फ्रिक्शन डायरेक्शन पछु को हबो या पर फ्रिक्शन डायरेक्शन पछु को हबो या पर भी फ्रिक्शन डायरेक्शन पछु को हबो रिमेंबर द फैक्ट कि if no external force is applied then on both the wheels friction will be in backward direction if acceleration is there on the front wheel friction will be in backward direction but on the rear wheel friction will be in forward direction is there any doubt do you have any doubt in the question yes no कहले म आगु जिबि कारण आउ गोटे गोटे क्वेश्चन पचरे बिनी yes no फटाफट आगु जिबि मु is there any doubt फटाफट तमरो पिले y और n रे
मोर पाठर स्पीड बढ़ी जीवो ठीक है शीघ्र बता बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट वर्क फॉर एनर्जी आल्सो नो नो इज देयर एनी डाउट एंड ए पॉइंट मन रखितो दीटा क्वेश्चन हे परिबो हैला ना दीटा क्वेश्चन याद रे हे परिबो गोटे एक्सेलरेट नो इज देयर एनी डाउट एंड ए पॉइंट मन रखितो दीटा क्वेश्चन हे परिबो हैला ना दीटा क्वेश्चन याद रे हे परिबो गोटे एक्सेलरेटेड गोटे बिना एक्सेलरेटेड ओके विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिले थ्योरी ही पचारथिले बहुत पिला क्वेश्चन आंसर मते देइथिलो द टू बॉडीज विल रीच द सेम हाइट पिले इट इज रॉन्ग देखो हुए कोन सो भाई जेतले पिले गोटे क्वेश्चन इज मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी ताकू परे सपोज द एयर एक्सर्ट्स ए कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टू बॉडीज सो लास्ट को हमको पचार छी मैक्सिमम हाइट विषय रे क्वेश्चन पचार ठीक तमे चिंता करो मैक्सिमम हाइट माने दिस इज ओनली आस्किंग फॉर अपवर्ड जर्नी if the body is moving in upward direction then obviously pile gravitation will be in this direction but when the body moves up air resistance acts downward ठीक ए कथाटा तमे कोड ना कोडी भूली गलो आ जदी एयर रेजिस्टेंस टाकू एफ बोली कहिबी तल पिले एयर रेजिस्टेंस जोकू तयारी होतबो एक्सेलरेशन रो वैल्यू बिकम्स फोर्स बाय मास पिले एटी तमे ट्रैवल ठीक ताले देखो नेट रिटार्डेशन तुम तो दीटा को बॉल को ऊपर को पकेइछो तले नेट रिटार्डेशन नो वैल्यू हबो पिले g + f / m एबे देखो जहारो मास टा पिले हेवी हेइथिबो तारो रिटार्डिंग फोर्स टा पिले कम हेइछबो कारण देखो जहारो मास टा पिले हेवी हेइथिबो तारो रिटार्डिंग फोर्स टा पिले कम हेइछबो कारण मास जदी हाई एटा तो रिटार्डेशन ना कारण मोशन अपवर्ड अछि एक्सेलरेशन तळु अछि तामन तो रिटार्डेशन हे गेला तल पिले मास जदी बेसी हला तल पिले एक्सेलरेशन टा कम हेइतो तल नेट माने रिटार्डेशन टा कम हेइतो तल जदी रिटार्डेशन कम हैला तल से पिले बेसी हाइट को जिवो कारण बेसी ये नै किंतु जहार मास कम थिबो पिले जहार मास कम थिबो तर रिटार्डेशन टा बेसी थिबो तल से पिले बेसी हाइट को जाय परिवन सो द हेवियर मास विल मूव मोर हाइट बहुत पिला विल रीच सेम हाइट काहे की कहलो ना पिले एटा सेतबेले हुए जतले एयर रेजिस्टेंस टा नेग्लेक्ट हेता इफ एयर रेजिस्टेंस इज neglected then maximum height is given by the formula u²/2g and it is independent of mass but if air resistance is considered then mass will play its game be cautious हां तल पिले mass जार बेसी हबो तार रिटार्डेशन कम हबो से बेसी हाइट को जीवो a will go higher than b option b was correct okay there is no trick basic principle trick वाला क्वेश्चन मैं देइनी okay we'll go to the next question a block a kept on an inclined surface just begins to 30 degree the फटाफट बते दोची क्वेश्चन begins to 30 degree the फटाफट बते दोची क्वेश्चन बते दोचे 30 degree inclination बते दोचे 30 degree inclination ना गोटे बॉडी जस्ट स्लाइड करबा स्टार्ट कला means 30 degree is the angle of repose for the block a another block is placed on the same inclined plane but angle of repose becomes 40 degree से 40 degree खसिबा स्टार्ट कला क्वेश्चन पचार थिला it is found that it just begins to slide in the tale kaharo mass kon heitho pile you can't say kon heitho all the three are possible dekho pile if angle is changing then angle of repose is changing and we know that coefficient of friction is equal to tan of angle of repose and coefficient of friction doesn't depend upon mass pile कहीं किसे खसिलानी भाई तार मटेरियल चेंज हे गेला कारण तुम बॉडी चेंज करलो मटेरियल चेंज हे गेला तो कोएफिशिएंट चेंज हे गेला कोएफिशिएंट चेंज कहीं की हला ना एंगल ऑफ रिपोज चेंज हे गेला सो इफ कोएफिशिएंट विल चेंज दैट कोएफिशिएंट थिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास सो या भितर कोटा भी हे परतंदा हम किछि भी कह परिबानी ऑल द थ्री आर पॉसिबल इज द राइट आंसर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी Any doubt in the question, you can ask me, or I will proceed. Anyone has got any doubt? Sir, why not B? Mass of A is less than mass of B. I said, if angle of repose is changing, that is changing the coefficient of friction, and coefficient of friction doesn't depend upon mass. Clearly I have said coefficient of friction doesn't depend upon mass. Coefficient of friction doesn't depend upon mass. Clearly I have said coefficient of friction doesn't depend upon mass. Coefficient of friction gote applied force upre depend kareni. Coefficient of friction pile mass upre depend kareni. Coefficient of friction only depends upon the nature of the material which are in contact.
सो मास कौन है ता भीतर तो आम किसी कंक्लूजन दे ही परिबन तो मास कथा बिल्कुल उठू ही नहीं okay so I'll proceed okay I'll go to the next question so you can't say that this is tricky or this is that this is this एगडा पचारे किछि लाभ नाही पिले a body of mass m is kept stationary on a rough inclined plane of inclination theta the magnitude of the force acting on the body by the inclined plane and when magnitude of the force is asking means it is asking contact force in the single shot I have said that contact force is the resultant of your normal reaction and friction तो जे जो माने फ्रिक्शन एटी आंसर बाहर करथिबो तांको आंसर तो mg sin थीटा रे बाहर थिला बट हियर द क्वेश्चन इज नॉट फाइंड फ्रिक्शन द क्वेश्चन इज magnitude of the force acting on the body by the inclined plane केते फोर्स पकला भाई नॉर्मल रिएक्शन किए पकै छी बॉडी ऊपर inclined plane ही पकै छी फ्रिक्शन किए पकै छी बॉडी ऊपर inclined plane ही पकै छी सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन सो पहिले बॉडी एम्प्टी अछि एंड द बॉडी इज एट रेस्ट it is saying that the body is kept stationary on a rough inclined plane माने friction is there तल पहिले बॉडी को टाणु छि के mg sin theta it is not sliding तल पहिले friction रो वैल्यू टा केते आजो friction रो वैल्यू टा आजो पहिले mg sin theta ओके नॉर्मल रिएक्शन तो पहिले एम्प्टी पड़ और नॉर्मल रिएक्शन का को बैलेंस करतो mg cos theta को तमने नॉर्मल रिएक्शन नो वैल्यू mg cos theta but it is acting in this direction mg cos theta now the question is what is the resultant of the forces applied by the inclined plane on the block so this is resultant of mg sin theta and mg cos theta which are acting perpendicular to each other पूरा सिंगल शॉट रे कोई की बतै दिले पिले the answer will be mg हैला ना देखि के otherwise it can use the language find the value of contact force भी mg होबो force by the inclined plane on the block तार भी आंसर mg होबो but if the question is find friction then its answer is mg sin theta बहुत कम पिलांकर आंसर बाहर थिला so next question को जीवा so next question टिके कैलकुलेशन थिला हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पचार छी ए जिंसटा न्यूमेरिकल थिला किंतु किछि बड़ कथा नथिला सिस्टम सोन इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग जस्ट खसिया पे रेडी होचा जिंसटा पिले जतले जस्ट खसिया पे रेडी होता तापर पिले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता तो क्वेश्चन पचारा द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल टॉप इज हाउ मच क्वेश्चन को इजी करा पे मु जान सुने कि मास न दे पिले वेट दे देथिली तो तमे चिंता करो तो पिले ए पॉइंट कथा जदि हम चिंता करियो तो why this body will slide because tension will pull it so anyhow we have to calculate tension in the string so this is a string this is a string this is another string three strings are there and the system is in equilibrium then easily you can find this tension by applying Lamies static रो क्वेश्चन आगुरु पचारि सारतली ताकू फ्रिक्शन संगरे मिक्स करेले तो तमे फटाफट आंसर देबार थिला and this weight is 8 newton then I can say that tension in this rope is 8 newton तले पिले आमे जदी गोटे Lamies theorem पे apply करा so in downward direction the force is your 8 newton and horizontally a pointer जदी देखबा horizontally tension is acting in this direction and another tension is acting in this direction apply Lamies theorem फटाफट apply करिया वर्तमान now you see this is 30 degree एटा जदी पिले 30 डिग्री हला तमने एटा पिले 60 डिग्री हेतु तले टोटल अंगटा पिले 150 डिग्री हेगला फटाफट कहूची तले 8 बाय sin 90 plus 60 जोटा के पिले cos 60 रो वैल्यू 1/2 तले पिले एटा 8 into 2 हेगला दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय सॉरी अकॉर्डिंग टू Lamies theorem मते एटा बाहर कराची तले पिले दिस फोर्स इज टेंशन डिवाइडेड बाय दिस एंगल आ एटा पिले तुमको 30 देइतला माने पिले एटा भी तुमरो 30 ही हेतिबो तले पिले टोटल एंगल रो वैल्यूटा पिले 120 आसी गेला sin 90 plus 30 त माने cos 30 तले तार वैल्यूटा आसी गेला पिले √3/2 2 कैंसिल हे गेला देन द वैल्यू ऑफ टेंशन इज 8√3 tension no value बाहर गेला and that tension is pulling this block but this block is not moving on the verge of moving so obviously there will be a maximum static friction so maximum static friction of value ta kete achi but clearly dekauchi normal reaction is 40 so maximum static friction is mu into 40 mu n and that should be balanced by 8√3 because 8√3 is pulling it so 8 cancel 5 the value of coefficient of friction mu is equal to √3/5 1.7 divided by 5 तो तमे तमो अंदाज रे भी कोई परसेंट आंसर या बारछि 0.35 so option D is the correct answer हेलानी आ मते तमने कहलो सर स्पीड केमती बढ़ेबू ट्रिकी हे गला कोन कोन सब कहलो तमने सब किंतु सेमता किछि नथिला ओके ओके आफ्टर दिस 5 क्वेश्चंस समस्त दया करी लाइक कर दियंतु
मु आउ थरे कहबिनी ऋषभ पंत अच्छा ओके अच्छा नाउ यू से मी आफ्टर दिस 5 क्वेश्चंस by कोटा फसे थिले मु तुमको why these type of questions will not come in NEET बताओ मते तमे why these type of questions are not perfect for NEET it's not time taking matter करे दिमाग केते लगौछो तमे so it doesn't depend कि पिले तमे ये वीडियो को लाइक करूचो न करूचो पिले बट स्टिल आई विल थैंक ऋषभ पंत बिगेस्ट फैन बट ऋषभ पंत आउ तो टीम रे रहिबो मके डाउट लागुची स्टिल तमनकर बेनिफिट हेबा दरकार आ तमे पैटर्न सहित पिले ओरिएंटेड हेबा दरकार देखो एबे जो क्वेश्चन टा मु डिस्कशन करची दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन द एग्जाम एटा ऑलरेडी एग्जाम रे आसी सरची मु आउडे क्वेश्चन एटी देई पारी थांती गोटे बहुत भलो क्वेश्चन थिला तमे समस्त मार्क करतो गोटे वर्ष गोटे ईयर क्वेश्चन आस्तिला half of the inclined plane is smooth other half is rough it starts from rest comes to rest तो पिला माने कितने फ्रिक्शन रे से क्वेश्चन बही रे देइता पिला माने कितने कितने मेथड पके सॉल्व करन बट यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन हाफ मिनट टाइम आज हम वर्क पर एनर्जी से तो रखी छी पिले फ्रिक्शन संगे वर्क पर एनर्जी काहे की मिसेल तुम समस्त जान परिबो ता ठीक अछि चले क्वेश्चन टा देई छी कोन तो या पे तो मु टेक्निक तुमको बतई देथिले जे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो वैल्यू जोटा हेइथिबो सेटा हेइथिबो tan थीटा इनटू 1 minus n square by 1 plus n square. In the single shot, I have given this answer. Tan mu is equal to tan theta into 1 minus n square by 1 plus n square. पके तो आंसर बारिबो किंतु बहुत पिलांकर आंसर ठीक भी थिला ना सर क्रिकेट खेल बंद बोली एठी के आछन अच्छा हो ठीक अछि से कथा परे तो वर्तमान देखो तुमको जदी कहला if time of ascent is equal to n times time of descent it is a कहि कोन time of ascent to upper point was found to be half of the time of descent तले n जगह तमे 1/2 पके परियो ऊपर देखियो if time of ascent is equal to n times time of descent then coefficient of friction mu is equal to tan theta into 1 minus n square by 1 plus n square single shot रे डायरेक्टली कहितली तो सर केमती हला तो केमती हला तो मु इटे बतई दोउची आपन किछि टेंशन नै किंतु परिकाल को आ केमती हला तुम पाखे टाइम नथिबो बाहर करिया पे ए जिंसटा मुंडर रखिथिबो हला ना केमती हला मु तुम बतई दोची बट यू ट्राई टू रिमेंबर दिस नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला तो पहिले मु एबे भी कहबी एई टाइम रे नीट एग्जाम आगु को आगु हम पाखु आसी तो एई टाइम रे केटा बेसिक रूल बेसिक टेक्निक गोडा मन रखि देले भलो जा पर तुम डायरेक्ट जिंस गोडा को अप्लाई कर परियो ओके केमती हला चलो देखिबा तो तुमको देइची टिके डिस्कशन करबी निहाती क्वेश्चन दा मु it is saying that this one is a rough inclined plane eta pele uta rough inclined plane achi its angle of inclination is theta and let's say it is a given mu फटाफट बते दोची it is given a speed u तल पहिले जेतलो ऊपर को जीवो तापर से कहूची after some time it comes to rest then it again moves down reaches at this point time of ascent time of descent भितर relationship ता तुमको देइथिबो हैला तो केमती सॉल्व करो द क्वेश्चन if u is the initial speed then obviously at this point final speed is 0 ठीक ना Now, let's say distance traveled is s. Let's say distance traveled is s. So I can say that s is equal to u into t1, where t1 is the time of ascent. U into t1. एबे देखो जतो से ऊपर को जाउ थो mg sin थीटा डाउनवर्ड थिबो पहिले फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड थिबो तल पहिले सेटा रिटार्डेशन हे गेला माइनस a जोटी अछि ता जगह रे मु लिखि परिबी g sin थीटा प्लस mu g cos थीटा g sin थीटा प्लस mu g cos थीटा into t1 square एटा मु लिख परिबे या काम सरी गला एबे देखो when it moves down जेतल पहिले से तळु को जीवो इनिशियल स्पीड 0 रु जीवो इंटरेस्टिंगली ये जतिक डिस्टेंस अपवर्ड जर्नी रे ट्रैवल करतिला ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी आल्सो इट विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस तले एबे जदी मु लिखिबी s is equal to इनिशियल स्पीड तो पहिले 0 हे गला तल पहिले एबे g sin थीटा टाउथबो फ्रिक्शन अटकोथु तले हमरो इक्वेशन आसी गला हाफ इनटू a जोटी लिखा है जी ता जगह लिखिबी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा आउट टाइम ऑफ डेसेंट ता केते आसी गेला ना t2 आसी गेला तो एटा t2 स्क्वायर आसी गेला देखो एबे दीटा को हमकु इक्वल करियार अछि जेतला हम इक्वल करबा तुमको सर u तो डाटा रे देनी तले आउट डाटा पुट करिया पड़िबो एटु एति जेतला हम देखिबा पहिले फाइनल स्पीड केते थिला पहिले 0 एंड 0 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u माइनस 80 तले पहिले जोटी देखाउस तो तले एटा पहिले केते आसी गेला u माइनस g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा into t1 बस सरीला कथा अब 0 जदी पले या संगे इक्वल हे गेला 0 इज इक्वल टू समथिंग हे गला
ताले पहले ए जीरो टा को इटू हटे दबा now I can write down कि u is equal to this much and if u is equal to this much you put it over here और देखो जिनसो कटिवार अछि कारण पहले एटा जेतले ब्रैकेट तुम खोलिबो एटा पहले g sin theta t1 into t1 तले एटा आसी गला पहले g sin theta t1 स्क्वायर सेमति माइनस g sin theta t1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जिवो आ मु तुमको जो फार्मूला टा कहली तुमको रेडीमेड मिल जिवो तो सेत पे एटा फेमस क्वेश्चन है कैलकुलेशन लेंथी था सो बेटर यू रिमेंबर द टेक्निक आई हैव गिवन सो मु तुमको कोन कहतिली त तुम तो सॉल्व करियो यू विल गेट दिस फार्मूला तो एठी हमको सॉल्व करिया पे टाइम नै मेथड बतै देली कोन करे अछि तुम निजे अप्लाई करी देख पारो कैलकुलेशन बहुत इजी होवार अछि आ जो माने आगुर मो पाखरे पढि छ समानकर कॉपी रे अछि सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इनटू 1 माइनस n स्क्वायर बाय 1 प्लस n स्क्वायर क्वेश्चन इज n रो वैल्यू टाइम ऑफ परसेंट इज हाफ तो n रो वैल्यू 1 by 2 आसी गला सो हियर आई कैन से दैट द फार्मूला इज tan थीटा इनटू 1 minus 1 by 4 so this becomes 3 by 4 divided by 1 plus 1 by 4 this becomes 5 by 4 तो पहले 3 by 5 tan थीटा आसी गला और 3 by 5 जोटा सेटा पहले 0.6 एथा मु थीटा न देके अल्फा देइथिले सो क्वेश्चन इज क्वाइट इजी हैला ना तो पहले जानिथिबो जदी पटाक से सॉल्व जो जानि नथिबो पहले कैलकुलेशन को जीवो कैलकुलेशन में पुनी ट्रैप हबो यू देइनी ये देइनी सी देइनी तो जिंसो गुडा को मार्क करो सिंगल शॉट बाहर को क्वेश्चन जीवनी नीट रे सीरियसली देखो एबे देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी थिला एमता टाइप रो क्वेश्चन बतै सारछि त माने समस्त कहलो सर टाइम हेलानी ट्रिक पड़ी गला ट्रिकी हे गला किछि नाही मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द भाई एतिकी फोर्स जदी मु पकोछि ना से रेस्ट रे रहउछि तले जदी पी आडू को पड़ला देन आई कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन एटा तो पहले नॉर्मल रिएक्शन हे गला देन आई कैन डायरेक्टली से दैट द वैल्यू ऑफ n सॉरी द वैल्यू ऑफ n becomes equal to p then I can say that the value of maximum friction जोटा हबो mu रो value I think I have given then the acceleration of the block of mass आपको कोन देछि रेस्ट छाड़ो देइनी हमकु हां इट दिया छै ना 0.5 तले पहले f max रो वैल्यू टा केते आसिगला 0.5 p तले p by 2 मैक्सिमम फ्रिक्शन हेगला पहले p by 2 और जदी p पकोचे से रेस्ट रहउछि त माने द थिंग व्हिच इज p by 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू mg सुनिबो टिके हला बॉडी को टाणुची किए वेट जोटा की केते आसीगला 10 कि सी कोची p पकेले से रेस्ट रहउची त माने दिस 10 इज बैलेंस्ड बाय मैक्सिमम फ्रिक्शन अब मैक्सिमम फ्रिक्शन केते बाहर कला हम p by 2 देन दैट p by 2 विल बैलेंस 10 त माने सिंपल कथा से इनडायरेक्टली कहला जे जदी तमे 20 न्यूटन रो फोर्स पकोउचो ताले ये रेस्ट रहउची क्वेश्चन पचारला फाइंड एक्सेलरेशन इफ द फोर्स p by 2 इज अप्लाइड त माने एबे तमे 10 न्यूटन रो फोर्स पकेलो ताले 20 न्यूटन फोर्स पकेले जदी रेस्ट रहउची 10 न्यूटन फोर्स पकेले मूव करिवो क्वेश्चन पचातला हमकु देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच सिंपल कथा ताले बे फोर्स रो वैल्यू टा केते आसी गेला 10 ताले पहिले मैक्सिमम फ्रिक्शन रो वैल्यू टा वर्तमान केते आछो मैक्सिमम फ्रिक्शन रो वैल्यू म्यू n त माने 10 into 0.5 ताले सेटा केते मैक्सिमम फ्रिक्शन तबे कहि परियानी एटा काइनेटिक फ्रिक्शन ना तो मैक्सिमम फ्रिक्शन नो एटा पहिले काइनेटिक फ्रिक्शन टा किंतु जेतु पहिले म्यू के देइनी तेनु जोटा म्यू है सेटा ही म्यू के ताले पहिले यार वैल्यू टा केते आसी गेला 5 काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू 5 जोटा कि पहिले याडू को पड़िबो बॉडी को टाणु चिकिए 10 काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू केते आसी गेला 5 नेट फोर्स ऑफ वैल्यू केते आसी गेला 5 आउ बॉडी रो मास देछि पहिले 1 kg तो तर एक्सेलरेशन टा केते आजो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ओके सेठी दियानी एठी दियाला कोन सुविधा बही करनु की तू हां बही कर दाल ओके तो ए जिनसटा मुंडे रखी था ए क्वेश्चन तो बहुत जनरल क्वेश्चन हेतिला जो मूव्ड अपवर्ड मूव डाउनवर्ड त माने बही करनो त माने ओके एबे बताओ एति की जा किछि कार कोठी कंफ्यूजन अछि यस नो कहले मु आगु को जीबी की डाउट जदी पचारि परिबो क्वेश्चन जदी डाउट अछि त हम पचारि परिबो जल्दी जल्दी टिके भाई डिस्कशन पर हमको और बहुत काम बाकी अछि इट्स ऑलरेडी 9:45 दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट गो फॉर मेंटी एंड इट इज डिस्कशन बट इट विल इंक्रीज योर स्पीड सेत पई जाउची बट योर परफॉर्मेंस इज नॉट वेल हियर ओके ओके जल्दी जल्दी बताओ शुड आई प्रोसीड और नॉट आई एम वेटिंग
कोठी किसी डाउट थिबो पचारि परियो आ जदि पिले डाउट होउची तमे ए वीडियो तो अछि तमे रिवाइंड फॉरवर्ड मार के भी देख पारे सबु जिंस बता हिची पिले सबु जिंस बता हिची हां याकू तमे आज कॉलोनी माने दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 केजी बॉडी देखो ए जो क्वेश्चन ता देथिले मु 60 केजी बॉडी बहुत पिला को भूल आंसर देथिले नहीं नहीं एटा बेसी ठीक थिला सॉरी एटा बेसी ठीक थिला 60 केजी बॉडी इज पुश्ड विथ जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस ए फ्लोर त माने कोन कहला से एतिक हमें फोर्स पकड़े जे जस्ट मूव्स माने मूव करनी इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन करा पे पूरा रेडी के अछि ता माने हमर जो फोर्स टा बे अप्लाई हिट दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन सो इनडायरेक्टली इट इज सेइंग दैट फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन क्वेश्चन एटी पिले स्टैटिक फ्रिक्शन रो वैल्यू भी दिया छि काइनेटिक फ्रिक्शन रो वैल्यू भी दिया छि सो फर्स्ट यू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रिक्शन as the body has mass 60 kg its weight is 600 therefore the value of normal reaction is also 600 from this you can calculate what is the value of f max is equal to mu n mu is 0.5 into 600 this becomes 300 newton tamne indirectly it is saying that f max is 300 newton indirectly it is saying that if I pull with a force 300 newton then it will in the verge of motion but if my force is greater than 300 newton then it will start skidding किंतु ता भीतर से किछि पचानी तापर से कोन कहला and the same force continues to act afterward देखो बोले तुम गोटे पॉइंट फर्स्ट एग्जांपल रे बतैथिली इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट मोशन बट इट इज इजी टू मेंटेन मोशन ए पॉइंट सिंगल शॉट रे जांकी निहाती देखियो तो सी कहला मोशन स्टार्ट हैला परे भी जोटा एफ मैक्स सेटा भी तो पहले एफ अप्लाइड हे गेला फर्स्ट क्वेश्चन हमको मिल गेला सी कहला दिस फोर्स इज आल्सो अप्लाइड नाउ इट इज आल्सो अप्लाइड नाउ मींस मोशन स्टार्ट हैला परे भी I am applying the 300 Newton force. Because जतलो पहले motion start है जो, there will be kinetic friction. The value will decrease. Friction of value decrease कर जो. Then what will be the value of kinetic friction now? तो kinetic friction of formula mu k n n रो value तो पहले 600 अछि और mu k रो value 0.4 अछि ताले एटा बर्तन केता आसी गला 240 आसी गला kinetic friction of value. So you are applying a force 300 Newton. Still you are applying. But the friction value has changed. It was priorly 300 Newton. Now it is 240 Newton. Finish. 300 minus 240. That is your 60 Newton force. That is equal to mass into acceleration. So 60 into A. So the value of A becomes 1 meter per second square. Numerical solved. Next question. Next question says that. फटाफट देखो खाली. A block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. जोटा आगुरु पिले तुमको जोटा आगुरु तुमको फिगर रे देथिली एबे डाटा रे देथिली से पय टाइमर भी चेंज करथिली ब्लॉक रो मास केतो अछि पिले 0.1 केजी तले पिले तार वेट आसी गला 1 इज ना सॉरी 0.1 into 9.8 अछि ना तो 0.98 आसी वेट हला ना तर weight रो value केते आसी गला ना 0.98 okay is held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton. So this force is 5 Newton. So obviously your normal reaction is also 5 Newton. Clear? If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, the magnitude of the frictional force acting on the block is how much? Very simple pile n ro value बारी गला तुमको बारंबार सिंगल शॉट रे बतैथिली don't show friction in the free body diagram रागो friction देखाओनी here normal reaction is equal to 5 Newton. First you calculate maximum static friction. So maximum static friction is equal to mu n and the mu kahin and wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block if the coefficient of friction mu रो value 0.5 दीजे तो पहले जदि mu रो value 0.5 देला तले पहले f max रो value mu n that becomes 2.5 solved भाई बॉडी को पुल के करछे 0.98 मैक्सिमम केते संभाली परिबो 2.5 तले को संभाली देबो तले स्टैटिक फ्रिक्शन पडिबो ना काइनेटिक फ्रिक्शन पडिबो पूरा क्वेश्चन संगे कथा वार्ता हबो ना भाई स्टैटिक फ्रिक्शन पडिबो केते पडिबो ना 0.98 पडिबो कुआडे पडिबो ना अपवर्ड पडिबो मु तो खाली केते पचारतली सो आंसर इज 0.98 सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन पिला ठीक से क्वेश्चन पढ़लानी क्वेश्चन कोन देछि देखिलानी आउ बकवासा आंसर दे देला हला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फिगर shows a wooden block in a horizontal plane at rest. This is at rest acted upon by three forces f1 देछि पिले 10 Newton f2 देछि पिले 2 Newton and friction
तो like obviously this is 10, this is 2. What is the net force? 8 Newton, right? But it is at rest. So friction is 8 Newton left. आगो मुंडर एटा रखो मु कहतली पेन पेपर हमें यूज करवानी, no calculation required, भेजा required. So this force is 10 Newton, this force is 2 Newton, net force is 8 Newton, still it is not moving, so friction is 8 Newton towards left. Now F1 is removed by 10 Newton polela. You are applying a force 2 Newton only. What is the value of friction? 2 Newton in this direction. Because if the 8 Newton achi, tale pile 2 Newton to rahi paribo. And static friction is self-adjusting. Magnitude agru 8 thila. Tome jodi 2 pakelo, tale 2 bhi hijibo. Direction yadu ko change hijibo. Tale tome pakecho 2, friction podila 2. My question was not what is the value of friction. My question was what is the resultant force acting on the block. Answer is 0. Next question. A block of mass 2 kg is given a push. भाई ये question किछि भी नथिला. 2 kg रो body अछि, push कर देली ताको horizontally, and then the block starts sliding over a horizontal plane. The graph shows the velocity time graph. This is your velocity time graph. The coefficient of sliding friction is the question. तो भाई velocity time graph रो clearly जाना पड़छि, it is retarding. आउ velocity time graph रो slope जोटा थाए पिले सेटा तो retardation ही देई थाए. खाली magnitude टा हमें consider कर दबा. ताले 8 एटा आसी गला पिले तमरो 4, ताले पिले 8/4 this becomes 2 -2 retardation पई देखो एटा obtuse angle बनै छि तो -2 मु ताको 2 लिखि देली because I am checking the value only. अच्छा भाई retardation का जो होई छि कारण move करथुला धीरे धीरे रेस्ट को आसला त माने kinetic friction पड़ी छि and it is pushed horizontally ताले पिले n तो mg संगे समान हबो ताले पिले move करथुला धीरे धीरे रेस्ट को आसला त माने kinetic friction पड़ी छि and it is pushed horizontally ताले पिले n तो mg संगे समान हबो ताले पिले kinetic friction नो वैल्यूटा केते आजो mu n माने mu mg ताले पिले retardation रो वैल्यूटा केते आजो mu g तो पिले mu आउ g. अच्छा बोधे एटा रॉन्ग आंसर दिया इतला देखि दो mu into g mu into g तो g रो वैल्यूटा केते आसी गला पिले 10 ताले mu रो वैल्यूटा आसी गला पिले 0.2. I think it is given 0.1. sorry, grace mark will be there, answer will be plus 0.2. sorry grace mark to all. मु एक्चुअली आंसर टा पले 0.2 ही रखिथि, लास्ट को चेंज कर देइथिले हैला. सो ग्रेस मार्क टू ऑल जदी एटा का को भूल दिया तो. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी रो क्वेश्चन थिला. अब बहुत पिला ए क्वेश्चन आंसर ठीक देइथिले हैला ना, तो किछि टेंशन नबार ने फटाफट देखुछि. ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए ट्रक. फटाफट डिस्कशन करछि जो माने आगुरु पढि सरछ बहुत भलो, जो माने आगुरु देखि नथिलो तो तमे फटाफट देखि दियो. एटा पिले गोटे ट्रक अछि हम पाखरे आउ ए ट्रक ऊपर लेट्स से ए ब्लॉक इज प्लेस्ड समवेयर हियर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. एई जगह रे रखा है. Block of mass 1 kg is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. फटाफट करियो एगडा क्वेश्चन प्ले एगडा फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन माने फटाफट करियो 0.6. Acceleration of the truck is 5 meter per second square. Acceleration of the truck is 5 meter per second square. So this is an accelerated frame. Laws of motion ने कहि दिले accelerated frame हैला माने पहिले frame change कर दियो. Except that the जो बॉडी टा अछि एटा तो घसी होछि पले ट्रक संगे ताले ग्राउंड रहि कि किछि लाभ नै, कारण घसी होछि माने सेठी जाई कथार्था करियो. एंड इफ आई विल चेंज माय फ्रेम फ्रॉम ग्राउंड टू ट्रक, जदी मु ट्रक को गली डांगनि पले याडू को सुडो फोर्स देखेबी ताले ग्राउंड सॉरी ट्रक रु रहि कि जदी फ्री बॉडी डायग्राम करबी बॉडी ऊपर देन देयर विल बी सुडो फोर्स व्हिच इज इक्वल टू ma. एक्सेलरेशन वैल्यू पले 5 देछि, बॉडी ऑफ मास 1 kg देछि, ताले पले सुडो फोर्स रो वैल्यू केते आसिगला ना 5 आसिगला. नाउ वी विल चेक whether that pseudo force is able to slide this body or not. चेक करिवा संगे संग बहुत इंपोर्टेंट कथा एटा मुंडर रखिबो हैला ना, कारण एनसीईआरटी क्वेश्चन. एबे देखो n रो वैल्यू तो पहिले mg हे गेला, तो n रो वैल्यूटा तमरो केते आसी गेला n इज इक्वल टू 10 आसी गेला. अब mu रो वैल्यू पहिले 0.6 दे दिछ, तले पहिले मैक्सिमम फ्रिक्शन रो वैल्यूटा वर्तमान केते आसी गेला. मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू 0.6 into 10 that becomes 6 newton. ता माने ए सरफेस टा can handle up to 6 Newton force, but the applied force is 5 Newton. So obviously the friction acting on the body will be 5 Newton towards right, for which option C is correct. हैला ना, बहुत इंपोर्टेंट कथा आउथरे बते दोछि. पहिले ट्रक जाउछि कोड को राइट को, बॉडी ऊपर फ्रिक्शन कोड पड़ला डायरेक्शन भी मुंडर रखितो. बॉडी ऊपर फ्रिक्शन कोड पड़ला राइट को. What is the direction of friction on the truck? Left को. ए डायरेक्शन भी मुंडर रखितो. What is the direction of friction on the
टायर्स भी जदी पचारला ना पिले इंजन भी जतले पावर देउता पिले पछकू पावर देता साइकिल वाला क्वेश्चन ही जो एटा सेतबले तो बहुत जिंस क्वेश्चन अछि आको टिके मुंडर रखिथियो 5 न्यूटन इज द आंसर आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग बिट फास्ट प्लीज हैंडल ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सार दिए तापर कथा करबा फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एटा पिले 100 न्यूटन नो फोर्स तुमको दे देला 100 न्यूटन देई जाओ पिले 37 डिग्री देई छे आ किछि भाबियार नाही पिले एटा निश्चित पिले 80 न्यूटन रो फोर्स हेतो फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट कवर कर दियो एटा 80 न्यूटन हेतो तो ऑब्वियसली पिले एटा 60 न्यूटन हेतो फ्री बॉडी डायग्राम रो बताउची बॉडी रो मास 3 केजी अछि सो आई कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेट इज 30 न्यूटन गोटे पिला मते पचाची सर क्वेश्चन फास्ट केमती सॉल्व करू भाई क्वेश्चन सहित कथा बर्ता हो आंसर बाहरी ऑटोमेटिकली याडू को 30 पल्ला याडू को पिले 60 पल्ला द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज 0.25 नाउ यू सी this is 80 newton and normal reaction is acting in this direction let's say this is an question last को पचाची the frictional force acting on the block is how much so for that you have to calculate what is the value of maximum friction first अब ले गोटे ही म्यू रो वैल्यू देइछि तले जदि हम f max रो वैल्यू टा कैलकुलेट करबा तो f max रो वैल्यू टा कैलकुलेट करबा तो f max रो वैल्यू विल कम as 0.25 into normal reaction and normal reaction is 80 so I can say that f max is your 20 newton ता माने ए सरफेस टा 20 न्यूटन जाय फोर्स को संभाली परियो बट बॉडी को ऊपर को ठेलुची किए 60 न्यूटन बॉडी को तळु को टाणुची किए 30 न्यूटन बॉडी ऊपर नेट फोर्स केतेला 30 न्यूटन अपवर्ड सरफेस केते संभाली परिबो 20 न्यूटन ताले सरफेस संभाली परिबो नाही नाउ द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड इफ इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम बट द वैल्यू ऑफ म्यू k is not given so f max is the kinetic friction f max is your 20 newton so the value of kinetic friction is 20 newton down so answer is option C so I will go to the next question okay next question for the arrangement shown in the figure the tension in the string to prevent it from sliding down obviously answer none of this because the answer is 0 why you say body को टाणुची किए पहले body को टाणुची किए mg sin 37 so mg becomes 10 sin 37 रो वैल्यू टा आसी गला पहले 3/5 so 6 न्यूटन नो फोर्स बॉडी को टाणुची सुनिबो कथा ठीक से now I will calculate what is the value of maximum friction possible तो पहले n रो वैल्यू तो mg cos थीटा हे गला तल पहले f max रो वैल्यू टा आसी गला f max रो वैल्यू टा आसी गला 0.8 into mg जगह रे पहले 10 लिखि दे की cos 37 जगह रे पहले 4/5 लिखि दे 5 कटे गला एटा 2 हे गला 4 into 2 so answer is 6.4 newton आराम से देखो which force is pulling the body 6 newton but surface can handle 6.4 newton for the time being ए रस्सीटा को काढी की फुपाडी दियो पले बॉडी को टाणुची किए 6 न्यूटन सरफेस केते संभाली परिबो 6.4 न्यूटन तबले संभाली दो बॉडी रेस्ट रहइबो तले जो स्ट्रिंग टा पे तमे लगाओ टाणी हबो की स्ट्रिंग नो एग्जांपल सिंगल शॉट रो देखियो टेंशन रो वैल्यू केते आसीबो 0 none of this is the answer option D I will go to the next question and I think this is your last question an empty plastic box of mass 9 kg is found to accelerate भाई एटा बहुत इजी क्वेश्चन ता थिला एटा तमरो बेलून वाला क्वेश्चन पीएम रे पचारथिला किंतु देखो आज का डेट रे भी तमनकर भूल आंसर हो empty plastic box of mass 9 kg यार मास हेगला पले 9 kg ता माने तळु को वेट टा केते पडुथबो ना 90 तळु पडुची but is found to accelerate up at the rate of g/3 so there must be an upward force we know that is buoyant force किंतु अपन त हम फ्लूइड जानने but एतिक तो जानि परछ जे गोटे upward force अछि because weight is 90 but it is moving up so let's say that force is your f and it is moving up at the rate of g/3 when placed deep inside water ठीक so I can say that f minus 90 is equal to mass into acceleration and mass is your 9 kg acceleration is 10/3 90/3 that becomes 30 tale buoyant force rago value ta bari gala amaro 120 now it is asking mass of the sand that should be put inside the box let's say m mass of sand is put inside the box that it may accelerate down at the rate of g/4 तो या भीतर सैंड भर्ती कर देली तो जदी सैंड भर्ती कर देली यार जो मास अछि सेटा पले 90 plus m हे गला and now it is moving down with an acceleration g/4 solve it problem solve देखो तल पले एबे वेट रो जो गोटे मिनिट तो एटा पले 90 plus 10m हां mg लिखि दै छै एटा 90 plus 10m बा तमे 9 plus mg लिख परियो हैला सो लेट्स से मु 9 plus mg लिखि देले सो नाउ डाउनवर्ड फोर्स 9 plus m into g
And what is the value of buoyant force? Minus 120, which I have already calculated. And now the system is moving down. So I can say that net mass asigala 9 plus m, and it is moving down with an acceleration g by 4. So you can apply g by 4, that is 5 by 2, 10 by 4. So I can say that 5 by 2. It applies acceleration g by 4. So you can apply g by 4, that is 5 by 2, 10 by 4. So I can say that 5 by 2. এটা পিলে সেপট সাইড কু নেই যাও, এটা সেপট সাইড কু নেই যাও, তাহলে পিলে 9 plus m যদি আমার কমন আসি গলা, so this becomes 10 minus 5 by 2, 20 minus 5 by 2, so this becomes 15 by 2, which is equal to 120. So 15 এটা আসি গলা পিলে 8, so 8 into 2 becomes 16. The value of m is equal to 7 kg. পিলে এটা question already pm3 50 these are the 15 questions I have discussed. Now it's up to you whether the question is difficult or the question is of moderate level. It's high time you check yourself. It's high time you check your performance. It's high time you check your speed beta. ହେଲା ନା, କାରଣ ପିଲେ କେଟା ଚାପ୍ଟର ଏମିତି ଆସିବ, ଏଇ ଫ୍ଲୁଇଡ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଫସିବ, ୱେଭ୍ ଲାଗେ ଆମକୁ ଆସିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବି ତମେ ଫସିବ. ସୋ ପ୍ରିପେୟାର yourself for the exam. ନହେଲେ ପିଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ଟାଇମ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ୟାଦରୁ କିଛି ଆମକୁ ବେନିଫିଟ ମିଳିବନି. ସୋ କଣ କରିବା ଏବେ କୁହ? तो मु तो सिंगल शॉट एबे अधिका रु अधिका ही छाड़बी, बिकॉज इन लाइव क्लास ए क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन इज टेकिंग टाइम, है ना, इज टेकिंग टाइम, है ना. सो यू वांट टू कमेंट एनीथिंग क्वेश्चन लेवल विषय रे मते बताओ जे सर एई जगह रे क्वेश्चन डिफिकल्ट गेला, बस मोर खाली गोटे ऑप्शन टा चेंज ही जाइतिला, माने 0.2 ऑप्शन डी हेबा कथा, सेटा ऑप्शन बी खाली दिया जाइतिला, अदरवाइज एवरीथिंग वाज राइट. आ जदी सेतेबेले जो माने ऑप्शन डी देइतिलो इट्स वेल एंड गुड की ठीक थिला. आ एबे बताओ को क्वेश्चन रे डाउट अछि, फटाफट बताओ भाई, टिके आगु जिबा हमें, फटाफट बताओ. आ जोगुड़ा सब नुआ आछो ए चैनल को पिले सब्सक्राइब करिवो, तापरे जीवो, न तम घरे पसिबी. बताओ शीघ्र शीघ्र. बेले बेले हमकु लागे वर्क पर एनर्जी कोन अछि भाई, आमे तो सब जानि छ नाही, डोंट थिंक लाइक दैट, समथि नाही. लास्ट मोमेंट रे भी क्वेश्चन एपट सपट करी तुम फसे देई पारियो, हैला ना. सो बी रेडी फॉर इट, नो डाउट सर. नाउ यू से मी सर एई जगह रे डिफिकल्ट थिला, एई जगह रे या थिला, यू से मी. I want your comments. I want your comments. The question level was high. The question was tricky. Sir, time होनी. भाई मते टी explain भी करिया को पड़ुची, दुनिया जिनसे भी करिया पड़ु. Still I am completing within stipulated time. ठोको like, ठोको ठोको. Sir जी जेते पंडित हेले भी आपण को क्वेश्चन ने फसीबो. सिद्धार्थ तू आज नथिलु कि रे, आज मेंटी दउदलु, आज ना कोन थिला सत्य कथा कहबो, मेंटी रे ना कोन देइतिलु सत्य कथा कहबो. सिद्धार्थ गडाई मेंटी रे नेम कौन थिला, एनोनिमस नेम कौन देइथिलु. ठोको लाइक, ठोको लाइक. What was your anonymous name? तू थिलु जे को नेम रे थिलु, मते कल सेति की जानियार अछि, को नेम रे थिलु, मते कल सेति की जानियार अछि. आ बाकी पिला जो माने अछो भाई टिके वीडियो ठीक से देखि देबो तमे. 15 क्वेश्चंस ऑल फिट फॉर द एग्जाम. आ जदी पिले गोटे गोटे चैप्टर हमें 45 क्वेश्चन खाली 80 डिस्कशन करछे ना भाई, कल तुम सुनी की जाओ एग्जाम रे पिटी देकी आसीबो. डहरा मु नुहे सर. अच्छा तमना जी डहरा ना रे थिलु, रैंक 1 को जाइनु तो से गपुनु आ. ओके 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 ओके. सो वर्क पर एनर्जी को जीबी पॉइंट सुनिबो पिले. मु जदी वर्क पर एनर्जी किछि कहूची त माने एग्जाम रे पढियो बोली कहूची, बकवास जिंस बहुत हेई पारे, मु कहूनी सगडा सुनिबो पिले. मु जदी वर्क पर एनर्जी किछि कहूची त माने एग्जाम रे पढियो बोली कहूची, बकवास जिंस बहुत हेई पारे, मु कहूनी सगडा. हला फटाफट मते कहबो, फटाफट मते कहबो. प्रोसीड करबी संगे संग, प्रोसीड करबी संगे संग पिले. मो पाखे बहुत कम टाइम अच्छी, जूलोजी सांकर भी क्लास अच्छी. सो 20 मिनिट भितर मते थियोरिटिकल केटा जिंस बतेबार अच्छी फटाफट.
आई एम वेटिंग फॉर योर y and n मत लगुच आज समस्ते फ्रस्ट्रेटेड है कि खाली मोबाइल टाको चाहिए बसचंती कारण परफॉर्मेंस को से माने भाबुचंती जे सर एक्चुअली जोटा कहउचंती सेटा ठीक कारण जम केबे भूल कहेनी जम तम भलो पई ही कहे ठीक ना आउ केजन पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाइचंती जोश प्रथमे तो तम भलो पई ही कहे ठीक ना आउ केजन पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाइचंती जोश प्रथमे तो स्टार्टिंग हला कहले सर हाउ इज द जोश हाय सर एबे पूरा लो रे अछन जे सत्तर में फसी जीवु ना कोन केही फसीबनी सबु बंची के आसीबो टेंशन नियनी बस निज मोमेंटम मेंटेन करो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर इवनिंग क्लास रे को चैप्टर रा मेंटी करिवे संबित कुमार इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड वर्क बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑन फ्रिक्शन जदी आज वर्क ता सारुची ताले मोर मेंटी वर्क रो आउ फ्रिक्शन करिविनी काली रो मेंटी दीटा कालीर मेंटी तापर मेंटी पिले पूरा वर्क ऊपर रहियो हैला ना मत गोटे इंपोर्टेंट जिनस मु तुमठु सजेशन नै कि स्टार्ट करिवि तो मु गोटे पढाई दिए इवनिंग रे हम सेटा डिस्कशन करिया नेक्स्ट हम पाखे जो कांसेप्ट रहला बिले ठीक है ठीक से देखो एबे कांसेप्ट पार्ट को जीवा बहुत फास्ट बतौची फटाफट धर दबो एगडा सब हैला ना थ्योरी बहुत किछि लिखा है तुम मानकर छोट तुमको देखा होताई पारे किंतु मो काम बुझेबा मु ताको अलगा स्टाइल में मोर बुझेबे पले हम पाखरे लास्ट को जो रियल फोर्स ता बाकी रहितला मु प्रीवियस क्लास से कहतली जे लास्ट को जो रियल फोर्स ता हमर बाकी अछि सेटा पले स्प्रिंग अछि तो स्प्रिंग विषय फटाफट कहूची मन देखि सुनिबो सो लेट्स से यू हैव गॉट ए स्प्रिंग लेट्स से you have got a spring in normal condition this one is a spring at normal condition normal अछि पिले मन कितो if you will मन देखि सुनिबे जो कथाटा कहूची एटा मु लॉज ऑफ मोशन रो सिंगल शॉट रे कहतली स्प्रिंग विषय कहला बेले एटी आउतरे मु कहूची हैला ना आपण जम तो वी आर चित्रगुप्त वेरी गुड सर आपण हम बेस्ट जम अच्छा ओके देखो तो वर्तमान से कांसेप्ट कोन कहूची फटाफट सुनिबो if you will मन देखि सुनो if you will pull the spring that is extension if you release the spring that is not compression एटी पिला पसंद से एटा मु कहि देली it will return to normal it is not compression normal रू जदी पुश करिवो it is compression एबे छाड़ देबो it will come to normal ए पॉइंट मुंड रे रखि दिबो now see if I will pull the spring this is extension work is done on the system minus होबो if you will release the spring निजे जीवो work is done by the system plus होबो if you will compress the spring work is done on the system minus होबो if you will release the spring it will come to normal by itself so work is done by the system एटा को मुंड रखि दिबो जदी normal रू extend हला कि compress हला work done is minus जदी एक्सटेंशन रू नॉर्मल को आसिला कि कंप्रेशन रू नॉर्मल को आसिला व्हाट डन इज प्लस फटाफट धरिबो बहुत सिंपल कथा कहली याकु निहाती मुंड रे रखि दिबो सो इन केस ऑफ स्प्रिंग the value of the force was minus kx now it is a variable force so directly I can say that work done is minus half kx square तो बहुत पिला मुंड रे खाली minus half kx square रखि जानती नो if compression is there then work done is minus half kx square if extension is there work done is minus half kx square you release it work done is plus half kx square you compress it work done is minus half kx square you compress it work done is minus half kx square you release it work done is plus half kx square सिंपल कथा पिला माइनस हाफ kx square plus half kx square ए कांसेप्ट रे बहुत कंफ्यूज होंती तो तुमको से जिंसटा ठीक से बुझी के जिबार अछि कारण यार यूजेस आगु को आसीबो ओके बट स्टिल आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जांपल रिगार्डिंग स्प्रिंग किंतु जतले मेन पाठ आसीबो मोर फर्स्ट एग्जांपल पिले फर्स्ट 4 एग्जांपल पिले स्प्रिंग ऊपर ही रहबो तो आगो हम टिके जिंसटा प्रोसीड कर दबा तापर आगु जिबा ओके सो दैट थिंग इज रिटन ओवर हियर फॉर स्प्रिंग compression or extension from normal position of spring is minus half kx square and if it returns to normal position then what done is plus half kx square and remember that the x things should be always calculated from normal length natural length through extension ta x कारण तमे देखिबो ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर छी वर्क डन टू एक्सटेंड a spring by 5 cm is w रो किछि वैल्यू दे देतिला find the work done to further extend it by 5 cm पिला से ट्रैप हो जाए तो फर्स्ट एक्सटेंशन 5 cm थिला नॉर्मल रू फर्दर एक्सटेंशन 5 त माने नॉर्मल रू 10 हे गेला
तो फर्स्ट केस रे x1 जगह रे 5 पुट करिवो सेकंड केस रे 10 पुट करिवो क्वेश्चन एमते अछि तम मानको पई हैला एबे देखियो एटा पहले स्प्रिंग रो कांसेप्ट दिला नाउ आई विल गो टू द वैल्यू ऑफ द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस फटाफट मन रखिबो तुम समस्त पढी सरचो जति की बेसिक जिंस अछि थियोरेटिकल क्वेश्चन याद रो आसे सेत पई बुझौछि जति की बेसिक जिंस अछि टिके फोकस दे सुनुतो क्वेश्चन किस्ता तम मानको पई भी अछि एटी देखबा के जनकर पाठ ठीक से बुझिचो force field in which work done on the system is stored in the system is known as conservative force and if energy is force field in which work done on the system is stored in the system is known as conservative force and if energy is lost then it is non conservative force जो lost then it is non conservative force जो field रे बा जो force field रे मार्क करो मु field language यूज करछि जो force field रे work done by the agent is stored in the system मु गोटे बॉडी को ऊपर को उठे देली को फील्ड रे ग्रेविटेशनल फील्ड रे कहा को उठेली मास को उठेली काम किए कला मु कली मींस एजेंट इज परफॉर्मिंग वर्क एंड इफ द वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम then that field is known as your conservative field so gravitational field is a conservative field कारण जो एनर्जी ता स्टोर होता है सेटा पोटेंशियल एनर्जी ही होता है छाड़ो से कथा से कहला जो फील्ड भीतर एजेंट वर्क कले एनर्जी सिस्टम भीतर स्टोर हुए दैट फील्ड इज नोन एज योर कंजर्वेटिव फील्ड बहुत किसी दिमाग लगार नहीं हैला ना आम पाठरे कंजर्वेटिव फील्ड किए किए अछंती ग्रेविटेशन पिले एठी आमे जहा सिखिबा पिले आजी मु एबे आ इवनिंग रे जहा बतेबी एई चैप्टर रे दरकार हो ग्रेविटेशन ने दरकार g1 m2 by r2 ग्रेविटी रे दरकार mg स्प्रिंग फोर्स रे दरकार kx दैट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स k q1 q2 by r2 कंजर्वेटिव फील्ड मैग्नेटिक फील्ड μ0 by 4 pi आइडियल sin थीटा by r2 सब जक एगडा पिले कंजर्वेटिव फील्ड हे था नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जति की प्रकार फ्रिक्शन सब नॉन कंजर्वेटिव हे था एयर ड्रैग फ्रिक्शन विस्कोसिटी एटी सब एनर्जी लॉस हुए सेटा सिस्टम भीतर एनर्जी स्टोर हुए नहीं साउंड एनर्जी की हीट एनर्जी आकर एनर्जी सब लॉस होता है सो दैट टाइप ऑफ फील्ड इज नोन एज योर कंजर्वेटिव फील्ड पले बहुत छोटिया क्वेश्चन यादरू पचे पारे मोर एबे गोटे क्वेश्चन तम मान को पाई एक्सेप्ट एयर ड्रैग फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ताको छोड़ा आमो पाठरे आ कोठी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड अछि जो माने पाठ पढितिबो से माने आंसर देई परिबो आ जो माने पाठ पढि नथिबो से माने बस एयर ड्रैग फ्रिक्शन और विस्कोसिटी को छाड़ देले आउ केते जन मते आउ गोटे एग्जांपल एटलीस्ट गोटे एग्जांपल देई परिबे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड रो वेरी गुड तपन बारिक वेरी गुड रोशन महापात्र मैग्नेटिक फील्ड इज प्योरली कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड इज रॉन्ग फ्रिक्शन तो लिखा है भाई हाँ सिद्धार्थ गोटे आंसर देला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एटा बते बहुत फेमस जिंस एटा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट दैट व्हेन टू ब्लॉक्स कोलाइड ताको भीतर गोटे इंपल्सिव फोर्स पड़े से जो फोर्स फील्ड एटा भी पिले नॉन कंजर्वेटिव ही था ए जिंस दीटा को जिंस मुंडा रखितो ठीक टाइम रे समानकर एग्जांपल देबी बहुत पिला भाबंती एतिकी नॉन कंजर्वेटिव छि नो induced electric field the field electric field which is developed by variable magnetic field is known as your induced electric field that is non conservative your any type of friction is non conservative because energy is always lost there no energy stored and impulsive force during collision that is also non conservative in nature leave it ebe dekho यादरू छोटिया तमे बॉय मानकर फिगर बेस्ड क्वेश्चन पाई परिबो what done to move fundamental particle in the field is independent of the path net work done in a cyclic path is zero and work done only depends upon initial and final level बारंबार या विषय क्वेश्चन अछि याको फटाफट मन रखिबो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फंडामेंटल पार्टिकल मास इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव फंडामेंटल पार्टिकल एगला पोल मैग्नेटिक फील्ड भीतर पोल इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर चार्ज आउ ग्रेविटेशनल फील्ड भीतर मास जेतेबेले मूव करे वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल लेवल अब साइक्लिक पाथ रे वर्क डन वैल्यू 0 होइता गोटे बॉल टाको ऊपर को उठेबी पुनी तळकु ने आसीबी पछरे वर्क डन वैल्यू केतेला सेम लेवल को ने आसी वर्क डन वैल्यू केतेला ना 0 होई अब साइक्लिक पाथ रे वर्क डन वैल्यू 0 होइता गोटे बॉल टाको ऊपर को उठेबी पुनी तळकु ने आसीबी पछरे वर्क डन वैल्यू केतेला सेम लेवल को ने आसी वर्क डन वैल्यू केतेला ना 0 होइता ठीक एमता गोटे क्वेश्चन तमे बॉय मानकर देखितो बहुत फेमस क्वेश्चन एटा पचारता इफ इन अ कंजर्वेटिव फील्ड a particle is moved like this and work done is w1 and while returning work done is then what is the relationship between them jaiche aschi tamane net work done value 0 w1 plus w2 is equal to 0 therefore w1 is equal to minus w2 taku tike twist kariki pacharibo in a conservative field a particle is moved like this work done is w1 and another particle is moved like this work done is w2
तो से पचार W1 और W2 भितर रिलेशन कोन आंसर आसीबो W1 इज इक्वल टू W2 कारण इनिशियल और फाइनल लेवल समान कर सेम अछि किंतु एटा इनिशियल जोटा फाइनल सेटा तेनु W1 plus W2 is equal to 0 therefore W1 is equal to -2 here W1 is equal to W2 next concept कंजर्वेटिव फील्ड रो ही एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा मन रखि द टर्म पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अटैच्ड विथ ए कंजर्वेटिव फील्ड तमे केबे सुनिबनी पिले फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी तमे केबे सुनिबनी पिले फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक ना तमे केबे सुनिबनी पिले विस्कस पोटेंशियल एनर्जी कार थाए ना केवल कंजर्वेटिव फील्ड रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ सी कहला बहुत इंपोर्टेंट कथा जति कथा कहली खाली पोटेंशियल एनर्जी सेट ने और भी अलग चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर दिस थिंग पूरा लास्ट पर्यंत हमर दरकार हो मॉडर्न फिजिक्स सरिया पर्यंत से पय जिनसोटा बहुत क्लियरली बुझतबो लास्ट थिंग से कहूची दिस पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन केटा बॉडी रो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ले पोटेंशियल एनर्जी আছে स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज होला इलास्टिसिटी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होला थर्मोडायनामिक्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज होला वेव रे स्ट्रिंग रे वेव जाउची पिले वेव स्ट्रिंग रो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होला एठी जतल भी पोटेंशियल एनर्जी आसीबो दैट इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन केटा जगह रे पोटेंशियल एनर्जी आसीबो जोटा पोजीशन जोगु आसीबो ग्रेविटेशनल फील्ड भीतर मास रो पोजीशन चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर चार्ज रो पोजीशन चेंज एठी सब जो पोटेंशियल एनर्जी आसीबो ऑल दिस पोटेंशियल एनर्जीज आर ड्यू टू पोजीशन and in some cases it is due to configuration eta मुंडर रखितबो एबे आसिला पाठ जोटा हमर दरकार कोन कहला जे भाई पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला नै एटा मुंडरू काढो बहुत पिलांक माने मुंडर थाय पोटेंशियल एनर्जी mgh नै पिले पोटेंशियल एनर्जी वेराइटी हे परियो हाफ cv स्क्वायर हाफ li स्क्वायर g1 m2 r k q1 q2 r हाफ kx स्क्वायर mgh बहुत प्रकार फार्मूला हे परियो तो मुंडर पोटेंशियल एनर्जी mgh बोली काढो तो जब भी पिले पोटेंशियल एनर्जी रो कैलकुलेशन आसे पिले मो पकर बहुत कम टाइम अछि मु बहुत फास्ट कहूची जेतरो पिले पोटेंशियल एनर्जी कथा आसीबो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्क डन रिमेंबर फेमस फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पचारियो पिले क्वेश्चन पचारिबा फसे दबो जति तम कांसेप्ट रे क्लियर नथिबो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम द फार्मूला वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड is equal to single shot रे मु एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रे भी कहि सरची is equal to change in potential energy remember famous formula potential energy केबे भी कैलकुलेट होबो ना पिले सेटा सबले वर्क डन रु ही कैलकुलेट होबो इट्स अप टू यू कि से वर्क डन बाय एजेंट हेची कि वर्क डन बाय फील्ड हेची मु एटा बॉडी को ऊपर को उठेबी पिले ग्रेविटेशनल फील्ड भी पडुची मु भी फोर्स पकेची तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी वर्क करची मु भी वर्क करची मु जो वर्क करबी सेटा पोटेंशियल एनर्जी होबो ग्रेविटेशनल फील्ड जो वर्क करबा तार सिंबल चेंज कर दियो सेटा पिले पोटेंशियल एनर्जी हेतो बहुत इंपोर्टेंट याद रु गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट लुचि के अछि जोटा कि लास्ट को मु तुमको बतेबी ओके सो ए पॉइंट मुंडर रखिथिबो नेक्स्ट पॉइंट को जिबा हम नेक्स्ट पॉइंट हम कहला एटा बहुत इंपोर्टेंट कथा जे जतले बेले हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करछे बेले बेले हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी भी फेस करिया बेले बेले हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी फेस करिया बाबा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रो एग्जांपल नै जाउची देखो एटा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड दिला बेले इफ ए चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम ओरिजिन then at this point potential energy is defined if the charge is brought from this point to this point then change in potential energy is defined origin ru particle जदी जाउथबो ताले पले potential energy होबो फील्ड भीतर कोनोसी दीटा पॉइंट भीतर जदी पार्टिकल जाउथबो ताले पले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होबो बहुत इंपोर्टेंट कथा कहूची पले मुंडर रखिथिबो potential energy depends upon frame change in potential energy is independent of the frame change हे गेले change in potential energy change हबन किंतु frame change हे गेले potential energy रो वैल्यू चेंज हे जिवो ठीक अछि कथा आउ बहुत इंपोर्टेंट आउट कथा आसिला एसएचएम रे दरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक रे दरकार मैग्नेटिज्म रे दरकार आउ सब जगह रे ही दरकार देखो पिले पोटेंशियल एनर्जी सेतबेले आसीबो जेतबे पिले गोटे कंजर्वेटिव फोर्स थिबो मुंडरू एटा जीव नै केबे भी फिजिक्स रे पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज ए फंक्शन u = xy + yz + zx तापर कोन लगी सब पढिबो नै ई पोटेंशियल एनर्जी मुंडरू जीवन नै पिले पूरा एग्जाम फिटिंग क्वेश्चन आगुरु क्वेश्चन देखि दो पिले बहुत तरह पचार पोटेंशियल एनर्जी जदी फंक्शन हिसाब रे देला वेदर इट इज तापर लिखो इन ग्रेविटेशनल फील्ड पिला भाबे बोले ग्रेविटेशन पचार देला इलेक्ट्रोस्टैटिक पचार देला बिल्कुल नहीं पिले जदी पोटेंशियल एनर्जी आज ए फंक्शन देई थिबो त आ पचार थिबो कंजर्वेटिव फोर्स रो वैल्यू केते अप्लाई दिस रूल कोटो आसला मु तुमको बते दोउची एबे एठी मु तुमको जिंसटा लिखितिला तल फील्ड जो फोर्स पकेला तल हमें कह पारे -fdr इज इक्वल टू याकू लिखि परिबी du बहुत फेमस फार्मूला है F is equal to -du by dr पहले केबे भी
at any point especially SHM रे पचरे एटा तुम SHM रे एटा तुम एग्जांपल हिसाब रे पाइबो तो एटा निहाती मुंडर रखिथिबो if potential energy is given as a function take derivative change the symbol you will get the value of field force field केते force पकोची बाहर करो derivative will be used if things are linear गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन होची किंतु पहिले पोटेंशियल एनर्जी ना एटा सबले मन करते पहिले फील्ड रे स्टोर हेकी थाए ताले फोर्स टा पहिले सेतोले 3 डायमेंशनल हेजिवो तो सेतोले पार्शियल डेरिवेटिव यूज करिवो सो 3D रे पहिले फोर्स रो फार्मूला एता माइनस del u by del x I cap एटा मुंडे रखियो बहुत क्वेश्चन पचारे पार्शियल डेरिवेटिव मारची एटा del u by del y j cap plus del u by del z k cap एग्जांपल अछि आगु को बस आगो कांसेप्ट मन को बहुत फेमस जिंस एग्जाम पई निहाती दरकार नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट रे मु कोन लिखि छी हैला ना ग्रेविटेशनल और एटा लास्ट पॉइंट हमर हां तो ग्रेविटेशनल आउ स्प्रिंग पई वर्क डन और पोटेंशियल जे पिला कंफ्यूज हुए सेटा मु लिखि छी देखो व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड अप ग्रेविटेशनल वर्क डन रो वैल्यू माइनस mgh हेता किंतु पोटेंशियल एनर्जी रो वैल्यू प्लस mgh एटा मुंडा रखिथिबो कारण वर्क एनर्जी थ्योरम भी अछि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अछि केटा जगह रे वर्क हिसाब रे जीवा केटा जगह रे एनर्जी हिसाब रे जीवा सिंबल टिके पर सपोर्ट जो पिला आंसर भूल बाहर जो ऊपर को गले वर्क वाला फेनोमेना कहले माइनस mgh हबो पोटेंशियल एनर्जी कहले प्लस mgh हबो अब जदी बॉडी तळु को आसुथबो वर्क कहले पले प्लस mgh हबो पोटेंशियल एनर्जी कहले माइनस mgh हबो मुंडरे रखिबो पिला भूल करंती एबे बतौते स्प्रिंग को टाणीली वर्क डन माइनस हाफ के स्क्वायर स्प्रिंग को टाणीली पोटेंशियल एनर्जी किंतु प्लस हाफ के स्क्वायर किंतु एनर्जी तार लॉस हैला पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के प्लस हाफ के स्क्वायर किंतु एनर्जी तार लॉस हैला पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के देली वर्क डन इज प्लस हाफ के स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के स्क्वायर एटा बहुत बड़ कथा किछि कुहाइनी काइनेटिक एनर्जी विषय बतैछि कोनोसी गोटे बॉडी केमितिया भी पाथ रे मूव करू स्ट्रेट सर्कुलर जेमितिया भी पाथ रे मूव कला माने तार पहिले काइनेटिक एनर्जी रहइबो आउ से जो काइनेटिक एनर्जी ता हेता पहिले फ्रेम ऊपर डिपेंड करे तो गोटे ट्रक टे मूव करछि ट्रक ऊपर ब्लॉक अछि आज एग्जांपल देइतिली फ्रिक्शन ने तो जदी पहिले ट्रक टा मूव करी जाउछि बॉडी तो मूव ट्रक रु देखले बॉडी मूव करनी तले ट्रक वाला कहबो जे भाई तार काइनेटिक एनर्जी जीरो किंतु मु कहबो इट इज मूविंग विथ द ट्रक विथ स्पीड v तले काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर कहबी सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम वर्क आल्सो डिपेंड्स अपॉन फ्रेम काइनेटिक एनर्जी फार्मूला समझते जानछ हाफ m स्क्वायर बारंबार कहली v फॉर स्पीड हेता है डायरेक्शन टेंशन नबनी जो बॉडी मूव करे तार मोमेंटम भी थाए जो बॉडी मूव करे तार काइनेटिक एनर्जी भी थाए मोमेंटम वेक्टर काइनेटिक एनर्जी स्केलर द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज a इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m एतिक जिंस मते बतेर दिला आज सेकंड हाफ रे हमें जबरदस्त रूल गोडा को सब शिक्षार अछि हमकु एगला थला पहिले कांसेप्ट याकू नै कि जोथरे प्रॉब्लम सॉल्व होबो प्रॉब्लम सहित पाठटा मु स्टार्ट करबी विथ मेंटी एनी डिस्कशन यू वांट अदरवाइज यू कैन लिव नाउ बहुत इंपोर्टेंट कथा बहुत कम समय भीतर डिस्कशन कली वीडियोटा को भलो की देखियो ला आउ याद रे तमर ही बेनिफिट हबार अछि इफ यू वांट टू से समथिंग अदरवाइज बाय बिकॉज आफ्टर 10 मिनिट्स तमन कर पिले जियोलॉजी क्लास स्टार्ट हबार अछि विथ मेंटी विथ क्वेश्चन रेडी की थाओ समस्त ता पई 10-15 मिनिट रो ब्रेक नै जाओ आउ सांग मान को डाको मेंटी मीटर हमें देखिबा की कोठी अछन ओडिसा लेवल शीघ्र शीघ्र ए जिंस गोडा को पिले तमे शेयर करो जहाँ अधिक अधिक पिला मेंट्री आसपारे मेंट्री 150 पिला आछन भाई 300-400 पिला आसीबा दरकार मेंट्री ताले जांकी बेनिफिट तमर हेबार अछि ओके ना ओके बाय बाय बेटा तो मु जानि छी मु जो थ्योरी पार्ट बतेली फास्ट बतेली किंतु इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो तो तमे परे भी जांकी ताकू देखि पारिबो दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड फ्रॉम द चैनल ओके थैंक यू बाय ऑल रेडी के आसो सेकंड हाफ पई रेडी है क्या सब पिले पेन पेपर धरी के आसो कारण काली जो मेंटी हेबार अछि तुम जदी वर्क को एनर्जी को लाइकली नउचो भाई काली मेंट रे फसिलो कह दोछि आगो तो सेही हिसाब रे रेडी के आसो नै थैंक यू बाय बाय at 10:35 you will have your geology class at 10:35 you will have your geology class thank you सेकेंड हाफ टाइम विल बी एट 3:30 हमर जनरल टाइम तमे देखो भाई हमें डेली पके दउछु टाइम टेबल ता तमे देखि दियो ताको टी YouTube रे ही पका होउची
कम्युनिटी की जाओ तुम पाई जीवो 3:30 PM रे आज मोर पुनी क्लास अछि एबे जियोलॉजी अछि इवनिंग टाइम 3:30 बेटा 3:30 आउ 2 ରୁ 3 दिन परे मेगामेंटी तुमरो स्टार्ट हेबार अछि एंड मेगामेंटी जोटा स्टार्ट हो बिले फास्ट टकरा टकरी हवा हमें फिजिक्स आउ बॉटनी भीतर ठीक बॉटनी सर ताको क्वेश्चन पचारे फिजिक्स मो क्वेश्चन पचारे वी विल डिस्कस अराउंड 100 क्वेश्चन मते दरकार कि फिजिक्स रे बेसी पिलांकर आंसर बाहरिया दरकार बॉटनी अपेक्षा ठीक ना बॉटनी रो आउरी अधिका बारले आई विल बी हैप्पी ओनली किंतु फिजिक्स टीचर हिसाब रे मते दरकार फिजिक्स आउ बॉटनी रो महायुद्ध हबार अछि नेक्स्ट मेगामेंटी रे फर्स्ट मेगामेंटी रे हैला ना तो सेटा हबार अछि तो आप एबे टेंशन नबार नहीं तो आगो मेजर मेजर विषय सारी की तापर हम स्टार्ट करे ओके थैंक यू।